हाँ एबे अच्छी हाँ हाँ अविनाश भी फ्री नहीं हाँ 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 एटा केमिते हो भाईना हाँ हाँ ठीक ठीक हाँ 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 तिरुपति भाईना हाँ वीडियो एटा केमिते हो वीडियो स्टॉप वीडियो जा वीडियो सेटिंग वीडियो वगैरह क्लिक करो विषय जी टिके टिके रुओ स्टार्ट वीडियो वगैरह जो एरो मार्क होती ताको क्लिक करो क्लिक कले ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପଛପଟେ ସମାଧାନ ସୃଷ୍ଟି सर गुड इवनिंग हेलो सर नमस्ते सर बोलिए सर मैं कल आऊंगा एक है उसके कल आऊंगा सर मैं आपका घर ठीक मैं हाँ हाँ नहीं अब मैं आ जाऊंगा सर कल एक काम है आपके पास आ जाऊंगा ठीक हेलो रंजन हाँ से स्क्रीन टा कोड आसियो तमे स्टार्ट वीडियो नहीं कि हमरो मूड स्टार्ट वीडियो हां म्यूट आउट स्टार्ट वीडियो बोल दिया आछे नहीं तले देखो लेफ्ट साइड रे हां गोटे स्टार्ट वीडियो पाखे जो अछि एटा बटन ने क्लिक करो पॉप अप आउट की हां कोन आसियो से स्टार्ट वीडियो पाखे तमे एरो मार्क दा जो अछि से क्लिक करले देखेबो बैकग्राउंड चेंज बोली हां सेटा आसिला बैकग्राउंड रे तो मते से स्क्रीनशॉट टा का पाखरे अछि अछि मेल रे छडा आइछि एबे मो मेल खोली डाउनलोड करिया अछि ताले आना बोली कि न व्हाट्सएप छाड़ीबी कि व्हाट्सएप ऑन हो कि तम संगे हां हबो तुम छाड़ दियो सेटा से रिवाइज करछुनी एटा डाउनलोड करियो पड़ियो के हां डाउनलोड डेस्कटॉप डाउनलोड करियो ना इधर ऑफ कर दे और इधर ऑफ कर दे ऑफ कर दे दादा केस त्रिपति हां भलो होला तुम रानू को कहलो जॉइन करिया पई हां रानू जॉइन हां भलो कला
जदि जदि पॉसिबल हबो आमे आ टिके माने मेंबरशिप टाको बढ़ाइबा पई बोली गोटे काम करबा जार जार जो माने पे कंप्यूटर रे बा लैपटॉप रे बसी चंदी we can also use our mobile also ना टाको न लिखि गिरी मोबाइल टा कर दे कोन होबे नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स टा टिके अधिक देखा जीवो ठीक ठीक ये तमरा रन नाम चेंज कर दो ना आगे नाम चेंज कर दो हां नहीं तार तो नाटा अछि तो नवनीता बोले अछि तार नवनीत हतार जियारी रो मैंने ओहो, बोर्ड अच्छा, अच्छा। चेंज कर एबे ना मोर आउट सिस्टम बिल खोल दउची हमरा सिमन रंजन हां हां तपरे एठी कोन केम देसबो तो छेडे जो स्टार्ट वीडियो बारे क्लिक कर बरा कल देखो चूज विजुअल विजय चौधरी टिके याको ज्ञान साहू टिके फोन कर दियो हां भाई ना कर दो देखो दिन के हां सेठी देखो छी कोन एवरीवन वुड आसी आउट कोन आसी वीडियो टा केम देखो मोर तो देखो कैमरा ताबे चूज विजुअल बैकग्राउंड ताबे वीडियो सेटिंग तीनटा देखो मोबाइल रे उत्तम तुमरा कैमरा टा टिके तळू करो आ टिके उत्तम आ टिके हां हां ठीक है हां ठीक अछि ना कोन मीटिंग जॉइन है ना कोन आसला मीटिंग अछि जॉइन है ना अरे सुनो ए पळलो से जो चार्ट वीडियो काढला पर मूड करो आगे मूड करो म्यूट करो एटा ना उतरे हला समस्त को मु रिक्वेस्ट करूची जे अपार्ट फ्रॉम योर लैपटॉप और डेस्कटॉप मोबाइल रे भी खोली दियो सो दैट हमर टिके नंबर टा बढ़ी जीवो अगर कार जूनियर पिला आर्टिकल से पहले कितने पहले भी कोई जॉइन हां हां हेले भाई ना मोबाइल आ लैपटॉप दी जाय खोल दी ना हां दीटा को खोली दियो किंतु नाटा को अलग अलग रख दो वीडियो अछि अलगा कर दी वीडियो सेटिंग अछि जय तमरो कैमरा को टिके तळू करो जय महापात्र ओपन कर रवि कैमरा टा को टिके तळू करे ओपन करले बैकग्राउंड अछि हां बैकग्राउंड में फिल्टर क्लिक करो हां देखो हां नहीं ऐसा डाउनलोड कर रखते तो हां मेल नेचर को वो स्टेप पे कर रखो हला देखो साइड राइट साइड पे देखो फिर दूसरी होती कॉलेज में नॉन बोलने का जो फोटो है नॉन का पक्का साइड में देखो प्लस टू देखो ना तो वो प्लस सिमेंट है प्लस सिमेंट नहीं सिस्टम राव मोबाइल का नंबर ऐसे करना नहीं हां सेटा क्लिक कर चार इमेज करो जो मोबाइल रो साउंड टा केमती ऑफ करावो हां सेटा क्लिक कर ले सेटा म्यूट अछि हां या म्यूट अछि माने मु कहले सुबी होनी किंतु साउंड टा तथापि मु कम करले मते एठी डबल साउंड हे जाउची तुम्हें वॉल्यूम तो कोई जियो कोई दियो माने जीरो करले मध्ये रहउची वाला साउंड टा नहीं तो हां भाई ना सेटा डाउनलोड कर हां वॉल्यूम टा स्लो कर दियो हे जियो नहीं वॉल्यूम टा स्लो करले मध्ये रहउची कटी कटी हां स्लाइड अल्प रहउची जणा पड़नी जते बैकग्राउंड के कहिला बेले ठीक सब तो द बैकग्राउंड के साथ श्रीकांत टिके सुननु भाई नमस्कार जय गुरु अब तक नहीं और क्या दिन है संगत सारे जॉइन करेंगे ठीक है देखो जरूर जॉइन करेंगे
बैकग्राउंड ये जो स्टॉप वीडियो साइड रे सेटिंग वीडियो स्टार्ट वीडियो वीडियो सेटिंग बैकग्राउंड ये मोर होगुन मोड क्लोज कर दी स्टॉप वीडियो कर दो हेलो ज्ञान बाबू नमस्कार। नमस्कार नमस्कार प्रसिद्ध बाबू धन्यवाद। तुम्हें विजय चौधरी फोन कले क्या उठेबो क्या ना टलू चा पियो पड़ितली मो ना कोन भाई ना को तो ଆଉ ଯୋଉ ବାକି 11 କୋଟି ରହିଲା ତାର ଅଛି କୋଡେ 11 କୋଟି ରହିଲେ ଏ ଏଟା କେତେ ରହିଲା ରେ 50 କୋଟି କୋଡେ ଲକ୍ଷ ରହିଲା ନା 95 କୋଟି 50 କୋଟି କୋଡେ ଲକ୍ଷ ରହିଲା हां ଆଉ ଆଟା ଟେକ୍ସ କୋଟି ଆଟା କୋଟି ଟେକ୍ସ ଆଗୁ ତ मेसेज अजित कुमार दास कोन 50 कोटी कथा हलानी हम टैक्स पकली हां ए तो टैक्स अजित 50 कोटी कथा होछ माने इंडिविजुअल पड़ी हां ये त्रिपति कोठी अछ ऑफिस रे अछि दुसुन म्यूट कर देंगे प्रसाद पटनायक मनोज पटनायक समस्त टिके बैकग्राउंड इमेज टाको चेंज करो इंडिया बैकग्राउंड हो जाएगा ना यार हबो बा हबो किन जावे रंजन रंजन अछि रंजन टाइट कर दो उत्तम सतपति हां करती अरे तुम जोइन की फोन करो हां कर दा आई नो कली मैंने कौन कहले हां जॉइन करी स्पीकर ठीक 6:30 बेलू को जॉइन करिवे 6:30 नहीं हां प्रशांत तमरो कैमरा टका टिके तळू करो प्रशांत हाँ प्रशांत पटने पूरा बाल डाई फाई करी बसची गला
ଭାଇନା ଆସିନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛି ମୁଁ ଫୋନ ମତେ କହିଲା ତୁ ପତି କହିଲା ମତେ କହିଲା ତୁ ଜଏନ୍ କରୁନା ରଞ୍ଜିତ କହିଲା ଅନଲାଇନ କହିବି ଇଏ କିଶୋର କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେଟା ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ଓପନ କରିଦେବି କଣ ଡିଏଲ ସାର୍ ଏକା ଏକା ମକା ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମକା ପଠା ଗୋଟେ ମକା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଠେଇ ଦେ ପଠା ହେଇଯାଇଛି ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର नमस्कार 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 टू ऑल नमस्कार नमस्कार गुड इवनिंग टू ऑल गुड इवनिंग रियल हाँ 85 ఇప్పటికి డెలివరీ టిల్ నౌ డెలివర్డ్ ఓకే మంచిదే బెస్ట్ టోటల్ 108 మంచిదే అది ప్రోగ్రామ్ ఎలా ఉన్నో తెలుసుకోవాలి యూ you did not see देखिनु कि काई दो लिंक खाली पठेई देखे हां हां बढ़िया है प्रोग्राम बढ़िया है ठीक है ठीक मोटिवेशन स्पीचेस आर गुड ओके I think speaker has already joined. Tripati, speaker has already joined. Sir, good evening. Good evening to all. Good evening. Good evening. Good evening to all. After a long time, we could see Padasai Desai. Yes, thank you, sir. ए बिते गोटे गीत गाई दउरंती हां पादशाह साहब गोटे गीत गोटे गाय हेई जाऊ ना एते कोन नमस्कार এটা দিনটা মিসি গেছে এটা স্যার নমস্কার ইগে দিনে মিটিং করবে দিলে গো এরা নেই করবে রে पुन्नो बैकग्राउंड चेंज করলো নি We would start sharp at 6:30. Now this is already 6:30. So let us start the meeting. The meeting is now called to order. Now our chairman greetings committee, Sri Krishna Chandra Sahu, is to lead us for national anthem and other items. Chairman greetings committee, please. Thank you, President, for this opportunity. I welcome President, Secretary, and all esteemed members of Tax Bar Association to this auspicious webinar held virtually. I will welcome Sri Rajesh Mehta, FCA of Indore, for his kind consent to enlighten us in income tax subject. Before starting the meeting, let us chant national anthem. Please wait.
TPA. For national anthem, is there any audio? Yeah. No audio. Just a second. Okay, no problem. Now I request our Vice Chairman Girish Mahapatra to greet the members who have observed their birthday and wedding day during the month of January 22. Mahapatra sir. Sir, are you available? Hello. Girish, achhi na nahi? Girish sir. Okay, then I will start. Okay. Yes. Okay. Hello. During this month, our member Uttam Kumar Satpathy, Priyanka Sahu, Biraka Vijay, Devanand Ponda, and Rohan Ponda, Arun Kumar Sabat has observed their birthdays during this month, and the marriage anniversary, the following members has observed: Vijay Kumar Chaudhary, Gyanaranjan Sahu, Sushil Patnaik, Rashmi Ranjan Padhi, and Abhinay Sahu, Moning Vaishnavi, R. Lakshmi Tarun. So on behalf of Greetings Committee, we once again welcome and greet you for this, for your successful in your life. So I hope all those who have attended, please accept our greetings. Thank you. And now, on behalf of our Tax Bar Association, for consolation of the family, we pray for the departed soul of Bhagirathi Panigrai's mother, who left heavenly abode on 14 January 2022. So now let us stand 1 minute for the war and peace, along with our members' mothers for this. Thank you. Please be seated. Thank you. Now I left this to our president for continue. Thank you, Chairman, Greetings Committee, and all members of Greetings Committee for leading us for all these items. Thank you so much. Thank you. Now, may I request our Secretary Brother Tripati Patra to kindly read out the minutes of the last meeting and get it confirmed. Tripati, please unmute. Please unmute.
Thank you, President. First of all, I would like to welcome our guest speaker, our dynamic and energetic speaker, Sri Rajesh Mehta, FCA Indore, who is a good friend of us and always we are meeting always and friendly relation with him. Now, the minutes of 13th General Body Meeting held at Rotary Conference Hall, Barampur on dated 18 December 2021. Meeting was called to order. Vice President Sri E. Ashok Kumar presided over the meeting. Vice President invited Sri Krishnan Chandra Sahu, Chairman Executive Committee, to do the needful. National anthem was invoked by all. 1 minute silence prayer was observed for world peace. Minutes of 12th General Body Meeting were read out by Secretary. Vice President informed the House regarding election of AITB Eastern Zone MC members Sri Jivan Kumar Das and Sri Purna Chandra Hota. Sri P.K. Naik offered a flower bucket to Sri Jivan Kumar Das. Vice President informed the House. Sir, please avoid disturbance. A new Disturbance, member, please. Sri Rabindra Kumar Sahu, and he gave self introduction. After his introduction, House will welcome his induction, and our member Sri P.N. Dave offered a flower bouquet. Vice President sought the opinion of House regarding organizing of taxpayer family picnic, but maximum members suggested to postpone the program due to ongoing pandemic situation. Vice President invited Sri Pramod Kumar Ponda to speak on the subject AIS and TIS. Also, Vice President invited Sri R.P. Sahu sir to share his views on AIS and TIS. K. Karnakar Rao, Shashank Shekhar Das, Vishal Tripathi, and Sri D.N. Singh participated in the discussion. Vice President invited Sri P.K. Naik, Chairman in the Taxation Committee, to brief the House regarding meeting with Commissioner of City and GST at Barampur on 25th November 2021. Also, he read out our representation given to Commissioner. Vote of thanks offered by our Joint Secretary Sri K. Shekhar Kumar. Then the meeting was adjourned. Over to President. Thank you, dear brother Secretary Sahib Tripati Patra. Should we confirm these minutes? Yes. Thank you so much. Mehta sir, actually, this is our regular general body meeting, so we have got certain formalities. Oh, no, So we sir. have many committees. You might have observed that they are doing their own. No, it's also necessary, sir. Thank you so much, sir. Now, dear members, I, on behalf of all the members of Barampur Tax Bar Association, thank our Direct Taxes Committee Chairman Pramod Kumar Panda, Vice Chairman Sarathi sir, members Sushil Patnaik, Nabin Behra, Lakshmi Bantan Naik, and Avinash Raju for having decided to have a meeting on direct taxes, and moreover for inviting Sri Rajesh Mehta sir and for selecting befitting sections for discussion to benefit a larger section amongst us. Before I hand over the proceedings to our Chairman Direct Taxes Committee, may I request our ever energetic Vice President Sri Ipari Ashok Kumar to kindly say a few lines about our association for the knowledge of our guest speaker. Ashok Bhaina, please. Thank you, President. And I welcome our speaker, today's speaker, Rajesh Mehta sir. Sir, for your information, our association is as old as 50 years. It is going to celebrate the Golden Jubilee this year, and many legendaries, many tax legendaries have contributed the efforts in making this association successful, and they have made this association flag high. Now also, we are actively doing these activities under the dynamic leadership of our President Dr. Ranjit Padi. He is also doing an excellent job in making this organization a top level. And another thing is, in this organization, the members involved are chartered accountants, advocates, company secretaries, and cost accountants. All are members are in this organization. So this organization
is befitting to its purpose, arranging the meetings, seminars on debate, tax matters and all other matters which are helpful to the members. Even if you go to if we observe our meetings will be lively. People are participating, the members are participating very lively and very actively, and it is one platform where we can enrich our knowledge. This is helpful one way to us, and at the same time, we are having entertainment by this association also. This is our way of doing the meetings, and every second Saturday, we have our meeting, evening 6 to 9, and the membership turnout in each meeting is not less than 80 to 100, sir. At any point of time, the membership strength in the meeting is 80 plus, sir. So we generally found very minimum, very little organizations with the strength of 80 plus turning out to every meeting. And all the meetings are followed by delicious snacks, dinner like that. So we enjoy the meeting and we enrich our knowledge like that. We spend our time, sir. This is all about our brief introduction about our association, sir. Thank you, President, sir, giving me the opportunity. Thank you so much, Ashok Bhaina. Thank you so much. He is our dynamic Vice President. Thank you so much for such a nice presentation of our association. Thank you so much. Now, may I request our Chairman, Direct Access Committee, Pramod Kumar Panda, to kindly take over for a diligent deliberation and interactive session. Chairman Pramod Panda, sir, please. Thank you, President. I welcome Rajesh Mehta ji, Chartered Accountant from Indore. I hope I am audible to all of you. Yes, very much audible. We have in our association a direct tax committee headed by a senior member, and also an indirect tax committee, plus a professional development committee, and various committees, various activity carried on by our association. So I welcome you to this gathering as a guest speaker on this evening. We shall be discussing about the 44AD, 44ADA, friends. These are the vital sections which is of day-to-day relevance to all the tax practice and for the small taxpayers. 44AD was basically introduced long back for computation of income from contract business. What's contract business? Later on, it was changed, and now all the businesses except profession and certain type of other commission business, etc., those are not covered under 44AD. To go into the 44ADA, which we will be also discussing today, the provision of 44AD, which relates to income from professional, for professionals like chartered advocates, engineers, etc., and having a certain level of turnover. Similarly, another section is 44AE. It was also introduced long back. Very recently, 2 years back, there was changes in the provision of 44AE. This is basically for the small truck operators. The turnover is less than the audit limit. And also the number of trucks owned by a operator is less than 10. If the number of truck is more than 10, you know it has to be audited under 44A. All these sections are again related to 44A. 44A speaks about the maintenance of the books of accounts. So where books of accounts to be maintained, whether you require to maintain the big books of accounts, or whether books of accounts, what data has to be kept in case you choose 44 ADA or ADA or AE provision for declaring your income. All those has to be
is covered under 44A. So 44A is a very important section which we will be discussing today. And we have a very valuable guest speaker with us, Mr. Rajesh Mehta ji. He will be deliberating in detail about the 44 AD, ADA, AE and 44 AA. Now, from my side, for the benefit of our members, I will request Mehta sir to specifically deal with regard to the F&O transactions, which is normally carried out by the small taxpayers out of compulsion or because of the idleness during the COVID lockdown period. So you may be surprised, the number of demat accounts open in India has gone up 10 times during the last 2 years. So most of the, for the current assessment year, I have come across cases where most of them, those who are not knowing about share transactions, they have got into the share business. So in such cases, the transactions runs into crores. And sir, I will request you to deal specifically regarding the 44 F&O transactions, all taxpayers, whether are covered under 44AB or 44AA, how to file the returns. Yeah, of course, we had discussed this issue long back, about 3-6 months back, in a virtual meeting. So we will be hearing from an expert. With this, I request CA Sushil Patnaik ji to kindly introduce Mr. CA Rajesh Mehta, who is the guest speaker for this issue. Thank you, Panda sir. I would like to thank Mr. President and all the office bearer of our TBA for giving me an opportunity to introduce the learned speaker and chartered accountant, CA Rajesh Mehta. He is also a DISA qualified and practicing CA since year 1996 at Indore in the name of Messrs. Rajesh Hiralal Mehta and Co. He is a meritorious student from his childhood and achieved rank in merit list in higher secondary board examination Rajasthan and awarded by the governor of Rajasthan in the year of 1985. He is a renowned direct tax speaker across India on issue of TDS and TCS, capital gains, search and seizure, penalty and prosecution, HUF, religious and charitable trust, tax audit, union budget, income computation and disclosure standards, etc. at various branches of ICI, tax bar associations, AIFTP, business and trade association and online platforms. His articles and views on income tax provisions are frequently published in tax newsletters, magazines, and online tax forums. Presently, he is the convener of Direct Tax Representation Committee of AIFTP, and he is also the national. He was also the national vice president of the All India Federation of Tax Practitioners (AIFTP) Central Zone in the year 2020 and 2021. And chairman of AIFTP Central Zone in the year 2018 and 2019. With this introduction, I would like to hand over to Direct Tax Committee Chairman Sir Panda sir. Thank you, Sushil. We have a very, one of the best speaker available across the country, CA Rajesh Mehta ji. I now request Rajesh Mehta ji to kindly start your deliberation on the subject. Thank you, Panda Sahab. My dear Ranjit Padi Sahab, Tripati Patra ji, Ipari Ashok Kumar ji, and my friend Padmanabh Dave ji, PC Hota ji, Sushil ji, and all the chartered accountants
tax practitioners and advocates of Tax Bar Behrampur. It's pleasure for me and I am delighted to be amongst you on this today's meeting. You have given me an opportunity to discuss some of the issues of presumptive taxation under section 44 AD, ADA and 44 AE, etc. So I will try my best to discuss all the issues, and after my deliberation, we will take up queries if there are any. So first of all, let me share my screen. Yes, sir, is my screen visible, sir? Yes, sir. Yes, okay. So first section under the presumptive taxation comes the section 44 AD. Who is eligible to opt for 44 AD and what is the section 44 AD? What are the provisions? So the first thing of section 44 AD is notwithstanding anything to the contrary contained in section 28 to 43C. So if anyone who is going to opt for the section 44 AD, he will not be affected by any of the violation of provisions of section 28 to 43C, because it states that notwithstanding anything. So if there is any payment without TDS, or if there is any delay payment of any taxes liability which is covered under section 43B, nothing will be disallowable. If there is any cash payment exceeding rupees 10,000, which is disallowable under section 40A subsection 3, even though there will not be any disallowance, because the section 44 AD starts with a non-obstant clause. Who can opt for the 44 AD? Any individual, HUF or partnership firm, not being LLP, is eligible to opt for section 44 AD and has to declare income of 8% or more of the gross receipts or turnover of business. He may declare 6% for the turnover or receipts carried out through account paycheck or online payment system received through these UPI, BHIM, NEFT, RTGS, etc. But here, if anyone wants to declare 6% income, then he has to keep in mind that all the recovery of this current year sales should be made before the due date specified under section 139 subsection 1, which was 31st December 2021 for the assessment year 2021-22. Here, one important thing we must keep in mind that many of our clients are nowadays receiving payments through Paytm or various online systems, PhonePe, etc. If all these are linked through the bank account, the payment is being received in the bank account, then we generally do the gross total of, we consider the bank account. But many times, some of the payments are received in wallet. And out of this wallet, our client makes the expenses. So such receipts in the wallet does not get reflected in the saving bank account or in the current account. In that case, we must be very much careful that we should ask for the details of any business payment received by our client in his online payment system like Paytm or PhonePe or Google Pay, etc. However, Paytm itself is a has been specified under category of a bank. So Paytm itself is now a bank. And here another thing, no separate expenses is allowable, as we all are aware. Out of this section 44 AD income, no deduction under section 30 to 38 will be allowed separately. So depreciation is also deemed to have been treated as deemed to have been allowed. Who can opt and who cannot opt?
any businessman can opt for section 44 AD except the person who is engaged in plying, hiring or leasing of goods carriages referred to in section 44 AE of the Act. And another thing, section 44 AD will not be available to professional covered under 44 AA subsection 1. Any person who is a specified professional means CA, doctor, engineer, as we will be discussing in the next slide also. So any specified professional cannot opt for section 44 AD. Any person who is engaged in commission or agency business, he cannot opt for 44 AD. Or any person who is claiming any deduction under section 10A, 10AA, 10B, 10BA, or any of other deduction being claimed under section 80HS to 80 RRB. One more thing, if the assessee is a partnership firm, then we all are aware that interest and remuneration is not allowed out of the presumptive income. If the partnership has, say for example, gross receipt of 80 lakh rupees and its income is at the rate of 8%, 6,40,000. Then out of this income of the partnership firm, any interest or remuneration paid or payable to the partner will not be deductible. Earlier it was allowable, but from the assessment year 2018-19, there has been introduced a clarification. So now it is not allowable. Then, who has to get his books of accounts? We are aware that if any person who is not opting for section 44 AD, अगर कोई व्यक्ति ने सेक्शन 44 AD ऑप्ट नहीं किया है तो क्या उसे ऑडिट करवाना जरूरी है? नहीं. बट अगर किसी ईयर में किसी असेसी ने एक बार 44 AD ऑप्ट कर लिया है तो बाद के 5 साल तक वह अगर किसी भी एक ईयर में वो 44 AD से बाहर हो जाता है, अपनी बुक्स को ऑडिट करवाता, देन जस्ट आफ्टर दैट for further next 5 years he cannot opt for section 44 AD. Every year he will have to get his books of accounts audited by a chartered accountant for next 5 years. So here section 44 AB में ये लिखा गया 44 AB clause E. 44 AB clause E में किन्हें 44 AD में कौन लोग क्वालिफाई नहीं होंगे, किसे ऑडिट करवाना होगा? Here they have mentioned every person carrying on business. If the provisions of 44 AD subsection 4 are applicable in his case and his income exceeds the maximum amount which is not chargeable to income tax in any previous year. So if two conditions are fulfilled, that if any person is covered under 44 AD subsection 4 and his income is above the minimum chargeable limit, that is above the rupees 2.5 lakh, he will have to get his accounts audited by a chartered accountant before the specified due date. So what is the 44 AD? In next slide I am discussing 44 AD subsection 4. Section 44 AD subsection 4 specifies that where an eligible assessee declares profit for any previous year in accordance with the provision of this section, it means if anyone has opted for 44 AD in his ITR for any previous year and he declare his income for any of the 5 assessment year relevant to the previous year succeeding such previous year not in accordance with the provision of subsection 1, he shall not be eligible to claim the benefit of provision of this section for 5 assessment year subsequent to the assessment year relevant to the previous year in which the profit has not been declared in accordance with the provisions of subsection 1. So if anyone has opted out, जैसे ही वो 44 AD के सेक्शन को उन्होंने फॉलो नहीं किया नेक्स्ट ईयर में, उसके बाद के 5 असेसमेंट ईयर तक वो he will not be able, he will not be allowed to opt for section 44 AD. He will have to get his books of accounts audited. And further, they have mentioned notwithstanding contained in the following provision of this section, an eligible assessee to whom provision of 44 AD4 are applicable and whose total income exceeds the maximum amount which is not chargeable to income tax shall be required to keep and maintain such books of accounts. And
documents as specified under 44AA subsection 2 and get them audited. So if he is out of section 44 AD, then he will have to maintain his books of accounts and he will have to get his books of accounts audited. So with this thing we can take one point that अगर किसी व्यक्ति ने 44 AD ऑप्ट नहीं किया, किसी व्यक्ति ने अपना किसी एसएससी ने अपना करंट ईयर में नया बिजनेस स्टार्ट किया, it is his first year of business and he has not opted for section 44 AD, then he is not required to get his books of accounts audited even if his net income is less than 8% or 6%. Say for example, any individual person whose turnover in the financial year 2021, financial year 2020-21 is 80 lakh rupees and it was his first year of business. So on this 80 lakh rupees, he earned only 3% net profit, that is rupees 2,40,000. So he will not be required to get his books of accounts audited. First of all, his income is less than basic exemption limit of rupees 2.5 lakh. And say for example, his income on the turnover of 80 lakh rupees is rupees 3 lakh. So it is about 2.5 lakh. But since in the previous year he has not opted for the 44 AD, so he is not required to get his books of accounts audited even if his net profit is less than 8% or 6% because he has not opted for 44 AD in the earlier year. But if he has opted out of 44 AD in any year, then for subsequent 5 years he is not allowed to opt for the 44 AD. He will have to get his books of accounts audited after completion of that 5 assessment year. Again, he is not required to get his books of accounts audited even if his net profit is less than 8% or 6%. So here again I have clarified in this slide, if any SSE who has opt out of the 44 AD and whose total income exceeds the maximum amount not chargeable to tax, that is not more than rupees 2.5 lakh in case of the individual, he shall be required to keep and maintain books of accounts as specified under 44AA subsection 2 and get them audited. What is the rule regarding maintenance of books of accounts? Every person carrying on the business or profession, not being a specified profession. So under this section 44AA, the professional are divided into 2 separate categories. One is the profession which is covered under 44AA subsection 1, and another is the profession which is not covered under 44AA subsection 1. So every person carrying on a business or profession other than profession specified under 44AA subsection 1 shall keep and maintain such books of accounts and other documents as may enable the assessing officer to compute his total income in accordance with the provisions of this act. So what are the conditions? If his income from business or profession exceeds rupees 1.2 lakh in case of individual or HUF, this limit is 2.5 lakh. So in case of partnership firm, the income is 1.2 lakh. If income is exceeding rupees 1.2 lakh, in case of partnership firm, they are required to maintain the books of accounts. But if it is not a partnership firm, it means it may be an individual assessee or an HUF assessee. Then if its income is exceeding rupees 2.5 lakh and for his total turnover or gross receipt or his somebody is unmuted. Venkat, please mute yourself. Sir. So if the gross turnover or gross receipt or sales of any individual or HUF is in excess of rupees 25 lakh, then he is required to maintain the books of accounts. Therefore, if any individual or HUF is having turnover less than rupees 25 lakh, he is not required to maintain any books of accounts, even if he is not following 44 AD. Or if any of the partnership firm is having
turnover more than 10 lakh rupees, then the partnership firm is required to maintain the books of accounts, or its income is exceeding rupees 1.2 lakh. Then any person who declare his income from plying or hiring goods carriages at less than minimum specified under 44AE. It means any of the person who is involved in goods carriages business, hiring and plying of the goods carriages. If he declare his income less than the specified under 44AE, then he is also required to maintain the books of accounts. And if any person who has opted out of 44AD and his income is above the basic exemption limit, he is required to maintain the books of accounts. So as per rule 6F, books of accounts required to be maintained by professionals. So if any person who is a specified professional are specified under section 44AA subsection 1. Every person carrying on the legal, medical, engineering, architecture profession, or the profession of accountancy, technical consultancy, interior decoration, authorized representative, film artist, shall keep and maintain the books of accounts and other documents specified in sub-rule 2 that I have given in the next slide. So, who are the specified profession? Advocate, doctors, engineer, architecture, CA, or any person who is involved in the technical consultancy or interior decoration. They are required to keep and maintain the specified books of accounts. Any person who is carrying on the medical profession will also have to maintain the form number 3C and inventory of medicines and consumable at the start and end of the previous year. Such books of account has to be kept for 6 years from the end of the relevant assessment year. The said time limit is applicable only to specified profession. So the time limit of 6 years is given under section 44AA subsection 1 and rule 6F. Rule 6F is applicable only to specified professional. So 6 years time limit is for only specified profession. What are the books of account which are specified for specified professionals covered under 44AA subsection 1? Those specified professionals have to maintain the cash book, journal, ledger, carbon copy of the bills, whether machine numbered or otherwise serially numbered. Wherever such bills are issued by the person and carbon copy or counterfoil of machine number or otherwise serially numbered receipt issued by him, provided that nothing in this clause shall apply in relation to sum not exceeding 25 rupees. So this is very old amount of rupees 25. Original bills wherever issued to the person and receipts in respect of expenditure incurred by the person. Where such bills and receipts are not issued and the expenditure incurred does not exceed rupees 50, payment voucher prepared and signed by the person. Provided that the requirement as to the preparation and signing of payment voucher shall not apply in case where cash book is maintained by the person. Zoom download करना, download करना, कौन एंड हो जा? Zoom टा download करो, तापरे मो तो मो ये password टा देले पिटे बताऊं. Whether tax audit is compulsory if turnover is not more than rupees 1 crore and not opted for section 44 AD. जैसा मैंने पिछली स्लाइड में भी डिस्कस किया था, again here I am discussing because this is a question which is asked for many times by our tax professionals. In the first year of business for such assessee, if turnover is not exceeding rupees 1 crore and the assessee has not opted for section 44 AD in any of the 5 immediately preceding previous year, then he may declare less than 8% or 6% of the income, and also no need to get books of accounts audited. So I have all, जैसा मैंने पहले भी डिस्कस किया, 1 करोड़ से कम टर्नओवर के लिए ही this relaxation is there. Rajesh sir, can I interrupt for a second? Yes. Sir, if any disturbance occurs, yes. I will be muting all. So you please have a look on that and you can unmute yourself. Okay. Thank you so much.
So as I already discussed कि अगर किसी का टर्नओवर 1 करोड़ से कम है, उनका बिजनेस का फर्स्ट ईयर है, उन्होंने 44AD ऑप्ट नहीं किया पिछले 5 सालों में, तो ऐसा व्यक्ति 8% या 6% से कम भी नेट प्रॉफिट बता सकता है. He is not required to get books of accounts audited, but he will have to prepare the profit and loss account and balance sheet, and this will have to be filled up in the ITR 3. ऐसी दशा में चूंकि अगर if his turnover is exceeding rupees 25 lakh, then he will have to fill up the profit and loss account and balance sheet in the ITR 3. Is it compulsory to follow section 44AD in the subsequent year or years if the assessee has opted for 44AD in the current year? अगर किसी ने 1 ईयर में 44AD ऑप्ट कर लिया तो क्या उसके लिए नेक्स्ट ईयर में 44AD फॉलो करना कंपलसरी है? If the assessee has opted for section 44AD, that is declared income at the rate of 8% or 6% or more, but he doesn't want to follow section 44AD in the immediately succeeding year, that is he declares income less than 8% or 6% and his total income exceeds the maximum amount which is not chargeable to tax, means his income is more than 2.5 lakh in case of the individual, then he has to maintain books of accounts and get them audited. In such a case, for succeeding 5 assessment year, such assessee will not be allowed to opt for 44AD, that is he will have to maintain books of accounts and get them audited. What is the rule regarding maintenance of books of accounts by specified professional? As per rule 6F, every person carrying on the legal, medical, engineering, architecture profession or profession of accountancy, technical consultancy, interior decoration or film artist or authorized representative shall maintain books of account if his gross receipts in the profession exceed rupees 1.5 lakh in any of the 3 preceding years. And profession of company secretary and information technology is also notified as specified profession. So company secretary and IT professional are also covered under 44AA subsection 1. What is the provision regarding maintaining books of accounts by business or non-specified professional? As I had already discussed, again I am repeating here that as per 44AA subsection 2, any individual or HUF carrying on business or non-specified profession will have to maintain books of accounts as may enable the assessing officer to compute the taxable income. If his income from such business or non-specified profession exceeds rupees 2.5 lakh or his turnover or gross receipt exceeds rupees 25 lakh. Any person other than individual or HUF will have to maintain books of accounts if his income from business or profession, business or non-specified profession exceeds rupees 1.2 lakh or gross receipt exceeds rupees 10 lakh. So the first paragraph is applicable to individual or HUF. The second paragraph is applicable to person other than individual HUF. It means applicable to partnership firms. What are the books of accounts? Here you may see that section 44AA subsection 2, which is applicable to non-specified professional and businessmen. Here it states that it will have to maintain books of accounts as may enable the assessing officer. So under section 44AA subsection 1, for specified professional, certain books of accounts are specified. जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड में बताया था, कैश बुक, लेजर, वाउचर्स वगैरह रखना है, वो 44AA सबसेक्शन 1 में है. 44AA सबसेक्शन 2 में यहाँ कहीं नहीं लिखा है कि बुक्स कौन सी रखना है. They have only mentioned that he will have to maintain books of accounts as may enable the assessing officer to compute the taxable income. So, but the definition of books of account has been introduced in the definition part of the income tax section 2. Section 2 clause 12 capital A mentions the books or books of account. So what are those books or books of accounts? Books or books of account include ledgers, day book, cash book, account book or other books, whether kept in written form or as printout of data stored in a floppy disk, tape or any other form of electromagnetic data storage device.
So any of the books of accounts may be maintained either in a physical form or in a electromagnetic data storage device or floppy or hard disk. Can an individual, being a commission agent, opt for Section 44 AD? No, a commission agent cannot opt for Section 44 AD, because even say for example any of the commission agent is having gross receipt of rupees 65 lakh rupees, he is not covered under 44 AD, because Section 44 AD has given some exception. So this is also one of the exception of 44 AD, that a commission agent cannot opt for 44 AD. Such individual has to maintain books of accounts if his income from business exceeds rupees 2.5 lakh or his gross receipt exceeds rupees 25 lakh, and he will have to get them audited if his gross receipt from commission exceeds rupees 1 crore. So commission agent is required to get his books of accounts audited only if his gross receipt from commission exceed rupees 1 crore. Less than 1 crore, he is not required to maintain books of account. Only he has to file the profit and loss account and balance sheet in ITR 3. Can a commission agent or a specified professional opt for 44 AD for his business income? Say for example, any person who is a commission agent of the garments and clothes. Any person is a cloth commission agent. So for his cloth commission income, he cannot opt for 44 AD, but he is also doing trading of clothes. Any person is engaged in the two business. One is the commission agency, second is the trading of clothes. So whether for the business of trading of cloth, can he opt for Section 44 AD? As per Section 44 AD, any person who derives income from specified profession or who is a commission agent is not eligible for 44 AD. And also he cannot opt for 44 AD for the business income, which is otherwise eligible for 44 AD. So if any Section 44 AD specify that any person who is a commission agent cannot go for 44 AD for his commission income, also even if he is doing a trading of clothes, he cannot opt for 44 AD for his cloth trading also. But another very important thing is that, however, income tax portal allows to opt for both simultaneously. That is, any person who sells the goods and he has the commission income also. Then for business turnover, he may opt for Section 44 AD, and for commission income, he may opt for filing profit and loss account and balance sheet and no accounts case, as the case may be. So here important thing is that for the purpose of, as per 44 AD, any commission agent cannot go for 44 AD, but the income tax portal itself does not prevent you. If you are having income from trading, then you can go for 44 AD for trading of clothes, for trading of any goods, or for any business which is otherwise covered under 44 AD. And for commission income, you may have to fill up the profit and loss account and balance sheet in the ITR 3. The income tax portal also allows a professional to opt for 44 ADA for a specified professional income and simultaneously 44 AD for his business income other than from specified profession. So another important thing, say for example, any person who is an advocate, he is representing his clients in the court. He is receiving legal fees from his clients for his appearance before the courts. So for this purpose, he is a specified professional. For this specified profession, he will have to opt for Section 44 ADA. But that person is a tax consultant also, and he is filing income tax return of his clients also. And he is filing GST return also for his clients. So this is not his legal practice. So for that business income, that is covered under non-specified profession, that may be covered under business income.
So any person who is an advocate, he will have to opt for 44 ADA for his specified professional income, and for non-specified professional income, he may go for 44 AD. Who can opt for 44 ADA? And can he opt 44 ADA in subsequent year if he has not followed 44 ADA in current year? Any individual HUF or a partnership firm, not being LLP, carrying a specified profession and having gross receipt not exceeding rupees 50 lakh shall have to opt for 44 ADA. कोई भी प्रोफेशनल जो स्पेसिफाइड प्रोफेशनल है, अर्थात CA, डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, आर्किटेक्ट, IT professional, company secretary, if his gross receipt is not in excess of rupees 50 lakh, 50 लाख या उससे कम अगर ग्रॉस रिसिप्ट है, तो ऐसा इंडिविजुअल HUF और पार्टनरशिप फर्म को अपना 44 ADA ऑप्ट कर सकते हैं, एंड दे विल हैव टू डिक्लेयर मिनिमम 50% ऑफ द इनकम ऑफ द ग्रॉस रिसिप्ट फ्रॉम सच प्रोफेशन. If he declare less than 50% of the income for such profession, then he will have to get his books of accounts audited. अगर कोई भी स्पेसिफाइड प्रोफेशनल CA, डॉक्टर, इंजीनियर अपनी ग्रॉस रिसीप्ट का 50% से कम इनकम डिक्लेयर करता है, तो उन्हें ऑडिट करवाना कंपलसरी होगा. बट इन द इमीडिएट सक्सीडिंग ईयर ही में अगेन ऑप्ट फॉर 44 ADA. जैसा 44 AD में 5 साल तक आप 44 AD ऑप्ट नहीं कर सकते, किंतु 44 ADA एक साल ऑप्ट किया, अगले साल आपने ऑप्ट नहीं किया, नेक्स्ट ईयर ऑडिट करवा लिया, फिर नेक्स्ट ईयर यू कैन अगेन ऑप्ट फॉर द 44 ADA. अगेन देयर इज नो सच रेस्ट्रिक्शन. व्हाट इफ देयर इज ए लॉस इन ए प्रोफेशन? अगर कोई इंडिविजुअल या HUF है या कोई पार्टनरशिप फर्म है, उन्हें प्रोफेशन में लॉस है, they do not have any much income. If any SSC who may be covered under 44 ADA, but he does not opt for section 44 ADA and his total income is not exceeding the maximum amount which is not chargeable to tax, or there is a loss, then he may fill profit and loss account and balance sheet without audit. अगर किसी को अपने पार्टनरशिप फर्म को या इंडिविजुअल को प्रोफेशन में कोई लॉस है, तो उन्हें P&L अकाउंट बैलेंस शीट केवल फिलअप करना होगा, उन्हें ऑडिट करवाना कंपलसरी नहीं है. इफ देयर इज एनी लॉस और हिज टैक्सेबल इनकम इज लेस देन रुपीज 2.5 lakh. Who can opt for the section 44 AE? 44 AE, any SSE who owns not more than 10 goods carriage at any time during the previous year, and he is engaged in the plying, hiring or leasing of goods carriages, he has to declare minimum income of rupees 1,000 per ton of gross vehicle weight per month for heavy goods vehicle, and for other than heavy goods vehicle minimum of rupees 7,500 per month. So what are the heavy goods vehicle? Heavy goods vehicle means any vehicle which is the used in goods carriage and having capacity of more than 12,000 kg gross vehicle weight. So more than 12 ton truck have to opt for 44 AE, and they will have to declare minimum of rupees 1,000 per ton per month per vehicle. And if any of the goods carriage is not more than 12 ton, then it is other than heavy goods vehicle. In that case, minimum rupees 7,500 per month per vehicle is required to be declared. In case of the firm, salary and interest is also separately allowable as per section 40 clause B. So as we have seen in 44 AD, under section 44 AD, the partnership firm is not allowed any salary or remuneration or interest. But in case of section 44 AE, if the partnership firm is involved in 44 AE business, then salary, interest and remuneration is separately allowable under section 40B. Books of account has to be maintained and audited if low profit is declared. If anyone is not opting the 44 AE, then he will have to maintain the books of accounts and get them audited.
If the assessee has wrongly opted for section 44 AD in place of 44 ADA, whether CPC can issue any notice under 139 subsection 9 of the act. Many times it happen. हमारे कई सारे क्लाइंट है जो मान लिया एडवर्टाइजमेंट के इसमें इन्वॉल्व हैं, उनका TDS 194C में होना चाहिए किंतु गलती से उनका TDS 194J में हो गया, या कोई टीचिंग प्रोफेशन में, any person who is a professor who is involved in teaching profession in any college and that college or any coaching institute has given the professional fees per lecture to that professor and deducted the TDS under 194J, whether he is compulsorily required to opt for section 44 ADA? No, because teaching profession is not covered under 44 ADA. Teaching profession is not a specified profession covered under 44 AA subsection 1, because 44 AA subsection 1 talks about only CA, doctor, engineer, advocate, architecture, or any company secretary, or any information technology professional. So teaching profession is not covered under a specified profession. Therefore, teaching profession is also not covered under 44 ADA. In that case, even if the school or college or any coaching institute has deducted TDS of the professional under 44 AA and TDS under 194J, even though he can opt for section 44 AD, then whether CPC can treat that return as a defective return, क्योंकि पिछले 4-5 सालों में कई सारे इनकम टैक्स रिटर्न्स को CPC बैंगलोर ने डिफेक्टिव में कवर कर दिया। उन्होंने कहा कि आपने आपका TDS 194J में कटा है, therefore you are a specified professional, and why did not you file your return under 44 ADA, and why did not you declare minimum 50% net income? But CPC has no authority because section 139 subsection 9 is to be exercised only by the jurisdictional AO. Therefore, अगर किसी का TDS 194J में भी कटा है तो भी वो अपना, अगर वो specified professional नहीं है, then he can file his ITR under section 44 AD and he may declare his income at 8% or 6%, minimum 8% or 6%. And अगर CPC ने 139.9 का डिफेक्टिव का नोटिस दे दिया है तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं, उसके लिए कोई अपील नहीं करना, उसको चैलेंज करने का रास्ता there is only one way, that is you may go to the High Court and you may tell to the High Court by way of writ petition that CPC Bangalore has no authority to treat my return as a defective. Then how they can treat my return as a defective if I have not opted for 44 ADA due to bona fide reason and due to reason as per the law. Whether a private limited company providing medical services or running a hospital is a profession specified under 44 AA subsection 1. As जैसा मैंने पिछली स्लाइड्स में डिस्कस किया, CA, डॉक्टर, इंजीनियर, मेडिकल, तो मेडिकल फील्ड में भी जो डॉक्टर्स हैं, those are specified professional. They have to declare their income under section 44 ADA. So another question arises that whether a private limited company which is providing medical services or running hospital, कई सारे हॉस्पिटल आजकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के अंदर रन होते हैं, तो क्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी 44 ADA में कवर्ड है? नो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वैसे तो पहले 44 ADA में से उन्होंने पार्टनरशिप फर्म के अलावा LLP को हटा दिया, नहीं तो पहले प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी असेसमेंट ईयर 18-19 के पहले वो अपना ITR 44 ADA में फाइल कर सकती थी, किंतु उनको 44 ADA में केवल इंडिविजुअल HUF और पार्टनरशिप फर्म को ही रखा है। बट क्या प्राइवेट लिमिटेड को 44 AA सबसेक्शन 1 में जो बुक्स ऑफ अकाउंट स्पेसिफाई है, क्या वो रखना जरूरी है या 44 AA के रूल के अनुसार है? नो, ITAT दिल्ली बेंच का एक डिसीजन है इन द केस ऑफ ITO वर्सेस आशालोक नर्सिंग होम प्राइवेट लिमिटेड। 19 मई 2006 का ये जजमेंट है ITAT दिल्ली का। उसमें उन्होंने ये कहा, ए कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन डज नॉट हैव ए माइंड और ए बॉडी, देयरफॉर cannot be engaged in a profession. It can neither have an intellectual skill or manual skill. Therefore, company is not a professional and
provisions of 44AA subsection 1 and rule 6F is not applicable to the company. Therefore 44AD कंपनी पहले चूंकि 44AD और 44ADA दोनों का प्रोविजन प्राइवेट लिमिटेड पे भी 44ADA कवर्ड था, और क्या प्राइवेट लिमिटेड को जो 44AA में बुक्स स्पेसिफाई की गई है वो रखना जरूरी है? नो, ITAT दिल्ली ने कहा है कि कंपनी इज नॉट ए इंडिविजुअल पर्सन, कंपनी डज नॉट हैव इट्स ओन इंटेलेक्चुअल स्किल और मैनुअल स्किल, therefore company is not covered under rule 6F. तो रूल 6F में 6 साल तक बुक्स ऑफ अकाउंट रखना जरूरी है एज पर इनकम टैक्स एक्ट, बट एज पर इनकम टैक्स एक्ट if the company is not a specified professional, company is not required to maintain the books of accounts for the 6 years. However, as per Companies Act, they are required to maintain, but as per Income Tax Act, they are not required. And what are the books of account? That is also not specified here. A doctor running nursing home also engages other doctors, whether this nursing home activity can be treated as business or as a profession. ITAT जोधपुर का एक जजमेंट है, ITAT जोधपुर इन द केस ऑफ सुनील चंडक वर्सेस ITO, असेसमेंट ईयर 2007-8, 12 अप्रैल 2012 का ये जजमेंट है ITAT जोधपुर का। उसमें उन्होंने कहा टू रीस्टेट, नो डाउट फिजिशियन और डॉक्टर्स हैव बीन हायर्ड, but as explained earlier, what is relevant and crucial is the nature of the services rendered by them, whether facilitative or substantially so, or on independent standalone basis or substantially so. It is only in the latter case that the assessed nursing home acquires the character of a business enterprise. Therefore, अगर कोई एक इंडिविजुअल डॉक्टर है, उसने अपने यहाँ नर्सिंग होम चला रखा है, नर्सिंग होम में अलग अलग उन्होंने सेक्शन और डिवीजन बना रखे हैं, उस डिवीजन में अगर कोई डॉक्टर को एंगेज किया, वो डॉक्टर अपनी सर्विसेज इंडिपेंडेंटली प्रोवाइड करता है। मान लिया एक डॉक्टर है जो कैंसर स्पेशलिस्ट है, उन्होंने अपने यहाँ पे एक हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर को भी अपने नर्सिंग होम में रखा है, बट दैट हार्ट स्पेशलिस्ट डायरेक्टली मीट द पेशेंट। हार्ट स्पेशलिस्ट के जो पेशेंट है डायरेक्टली उनके पास जाते हैं, डायरेक्टली उनको फीस देते हैं। उस फीस में मान लिया मंथली उनको 1 लाख रुपीस फीस आ रही है हार्ट स्पेशलिस्ट को, उस फीस में से 30% की फीस वो दूसरे डॉक्टर को जो कैंसर स्पेशलिस्ट है उसका वो पूरा नर्सिंग होम उसको पे करता है उसका रनिंग एंड मेंटेनेंस के लिए। तो ये जो 1 लाख रुपए मिला है, ये 1 लाख रुपए क्या बिजनेस इनकम है? जो डॉक्टर को 30% पैसा मिला है, वेदर इट इज बिजनेस इनकम? यस, इट इज बिजनेस इनकम, बिकॉज और जिस डॉक्टर को पैसा दिया गया उस डॉक्टर जो हार्ट स्पेशलिस्ट है उसके लिए ये 1 लाख रुपीस उसका 44 ADA में कवर्ड होगा, किंतु जिस नर्सिंग होम को 30% शेयर मिला है, यह पैसा उसे शेयर के रूप में मिला है, अपने उसको रनिंग एंड मेंटेनेंस के रूप में मिला है, बिकॉज हार्ट स्पेशलिस्ट अपनी इंडिपेंडेंटली सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। In that case, it will be treated as a business activity, and in that case, business activity 44 AD 2 करोड़ तक हम 44 AD ऑप्ट कर सकते हैं। So any of the person who is involved in nursing home and उन्होंने इंडिपेंडेंटली डॉक्टर्स की सर्विसेज ली है, तो फिर वो 44 AD में जा सकते हैं 2 करोड़ तक। उसमें 50 लाख रुपए की या 44 ADA के प्रोविजन लागू नहीं होंगे। Therefore, if the services of doctors are taken independently on standalone basis or substantially so by a nursing home being run by a doctor, such nursing home would be treated as carrying on a business. Therefore, it will be covered under 44 AD and not covered under 44 ADA. So this is very important thing for us, क्योंकि कई सारे हमारे जो clients हैं, doctors हैं, they are running pathology also. In that case, those persons may be covered under 44 AD. अगर पैथोलॉजी के अंदर जो व्यक्ति पैथोलॉजी रन कर रहा है, जो पैथोलॉजी का ऑनर है, he is not having specific qualifications, but he has engaged some other doctors, then such person who is running the pathology will be covered under 44 AD. He will not be covered under 44 AD. Whether business includes profession or vocation.
unless otherwise specifically excluded. Business includes profession and vocation. जैसा मैंने पिछली स्लाइड में चर्चा किया कि 44AA सबसेक्शन 1 में जो प्रोफेशन स्पेसिफाइड किए गए सीए, डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, those profession are excluded from the professional normal profession. Therefore, any person who is not a specified profession, it means any person who is covered under any business or who is covered under any non-specified profession, then it is covered under business. So any non-specified profession, जैसा मैंने एक एग्जांपल दिया था कि टीचिंग प्रोफेशन, टीचिंग इज ए प्रोफेशन. तो टीचिंग प्रोफेशन में जो व्यक्ति इन्वॉल्व है, क्या वह 44 ADA में जाएगा? नहीं, बिकॉज टीचिंग प्रोफेशन इज नॉट कवर्ड अंडर 44 ADA. It is not covered under 44AA subsection 1. Therefore, teaching profession person can go for the 44 AD because teaching profession is a business. Business includes profession and vocation. Therefore, except where the law specifically refer any provision for profession or for specified profession, the word business includes profession. Therefore, any income which is not from a specified profession, income from non-specified profession can be treated as a business income. There is a judgment of ITAT Pune. ITAT Pune का एक जजमेंट है, उसमें उन्होंने बताया कि whether business includes profession, तो क्या बिजनेस में प्रोफेशन इज ऑल्सो कवर्ड अंडर बिजनेस. उस ग्राउंड पर ITAT पुणे ने एक जजमेंट दिया इन द केस ऑफ गेरा डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस DDIT इंटरनेशनल टैक्सेशन. 29th July 2016 का ये जजमेंट है, इन विच दे हैव मेंशन्ड दैट the learned AR asserted that the payment made by assessee to Gensler for rendering services and providing drawing and design for its commercial building is the business income of Gensler. To support the contention that business includes profession, reliance was placed on the decision of Barendra Prasad Roy versus ITO 129 ITR 295 SC. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है बरेंद्र प्रसाद रॉय का, इस जजमेंट को उन्होंने फॉलो किया. उसमें उन्होंने कहा बिजनेस इंक्लूड्स प्रोफेशन. ITAT पुणे ने भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट को फॉलो किया, इस जजमेंट में कहा बिजनेस इंक्लूड्स प्रोफेशन. The Honorable Apex Court, in the said case, while explaining the meaning of expression business connection as used under Section 9 of the Act, has also in an explicit manner held that business does not necessarily mean trade or manufacturing only. It includes within its scope professions, vocations, and callings. Therefore, any profession which is not a specified profession can be covered under business. एंड अगर वो बिजनेस में कवर्ड है तो उनके लिए 2 करोड़ तक भी वो 8% नेट प्रॉफिट डिक्लेयर कर सकते हैं. बिकॉज देयर आर मेनी टाइप ऑफ सर्विसेज. वो कई सारी सर्विसेज हमारे क्लाइंट्स प्रोवाइड करते हैं जो प्रोफेशन के रूप में कवर्ड है, वो प्रोफेशन है, बट दोज आर नॉट स्पेसिफाइड प्रोफेशन. तब उन पर 50 लाख की लिमिट लागू नहीं होगी, उन पर 2 करोड़ की लिमिट लागू होगी. अप टू 2 करोड़ ऑफ देयर टर्नओवर दे कैन ऑप्ट फॉर ओनली 8%. या उनको 1 करोड़ तक से कम का टर्नओवर अगर उनका है तो वो P&L बैलेंस शीट फाइल कर सकते हैं. उन्हें मिनिमम 8% नेट प्रॉफिट भी डिक्लेयर करने की आवश्यकता नहीं है अप टू टर्नओवर ऑफ 1 करोड़. 44 AD excludes persons covered under 44AA subsection 1. 44 AD में ये बताया गया 44 AD excludes persons covered under professions specified under 44AA subsection 1. The provision of 44 AD subsection 6 states that provisions of 44 AD notwithstanding anything contained in the foregoing provision shall not apply to a person carrying on profession as referred to in 44AA subsection 1, a person earning income in the nature of commission or brokerage, or a person carrying on any agency business. If these 3 type of persons are there, then they are not covered under 44 AD. However, there is some slight controversy, but as I have already discussed in my earlier slide, that if any person which is not a specified profession that is covered under 44 AD, and income tax portal allows to file this 44 AD ITR, which is not a specified profession.
TDS on advance payment works to be executed in the next year. Sometimes हमारे कुछ सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स के केसेस होते हैं जिनको हम 44 AD में ले जा रहे हैं या उनका टर्नओवर 2 करोड़ से कम है. उनके केस में कई बार ऐसा होता है कि मार्च में उनको कोई एडवांस रिसीव्ड हुआ है, मार्च लास्ट वीक में प्रोग्रेसिव पेमेंट उनको रिसीव होता है या मोबिलाइजेशन एडवांस हम बोलते हैं उसको. मार्च में मान लिया उसको 50 लाख का पेमेंट रिसीव्ड हो गया. He has received a payment of rupees 50 lakh at the fag end, at the last week of the March. So he will execute the work in the next year. He will execute the work in the month of April or May in the next financial year. Then अगर क्या 194J में या 194C में TDS डिडक्ट हो गया है तो क्या हमें इनकम करंट ईयर में ऑफर करना है? नहीं. If you have not executed any work relating to that TDS, then you will have to carry forward that TDS for the next year and you will have to offer that income in the next year and you can claim that TDS in the next year. Then another, हम जो 44 AD के ITR हमारे क्लाइंट्स लोगों के फाइल करते हैं, जिनका 2 करोड़ से कम टर्नओवर है उसका हम 44 AD में रिटर्न फाइल कर देते हैं. तो ऐसे लोग अगर अपनी बिजनेस प्रीमाइजेस के लिए, अपने पर्सनल रेजिडेंस के लिए 50,000 रुपीज पर मंथ से ज्यादा का रेंट पे करते हैं, दे आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट द TDS इफ ही इज एन इंडिविजुअल और ए HUF पर्सन. क्योंकि हमें अभी तक ये मालूम है कि अगर हमारे असेसी जो इंडिविजुअल है या HUF है उनका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है तो उन्हें TDS काटना जरूरी, चाहे वो 44 AD में ऑप्ट कर रहे हैं अथवा नहीं. क्योंकि 44 AD 2 करोड़ तक लागू है, किंतु TDS के प्रोविजन में यह कहा गया है कि अगर इंडिविजुअल या HUF का टर्नओवर 1 करोड़ से अधिक है, चाहे वो 44 AD में ऑप्ट कर रहा है, इवन दो TDS के प्रोविजन इंडिविजुअल HUF पर लागू होंगे. बट एनी इंडिविजुअल और HUF whose turnover is less than rupees 1 crore, but for his personal residence or for his shop or godown, he is paying a rent of rupees 50,000 per month or more, then he is required to deduct the TDS under section 194 IB. Say for example, any student, he is living in Mumbai and he is paying a rent of rupees 50,000 per month for his flat or more, then he will have to deduct the TDS under 194 IB. So this we also have to keep in mind for our assessee who are paying rent more than 50,000 for their business or personal residences, even if they are not covered under 194. They are not covered under 194C or 194J because they are not liable for audit or their turnover is not exceeding rupees 1 crore or 50 lakh in case of the professional, or they are covered under 44A. Any person who is having not more than 10 trucks and he is covered under 44A, but for his offices he is paying rent more than 50,000, then you must advise your client to deduct TDS under 194 IB. So this we must also keep in mind here. TDS on professional fees 194J. Here I have discussed 194J also because many of the school and colleges are deducting TDS on payment of professional fees to the teaching professor. They are deducting TDS under 194J. But section 194J specifies that only for specified professional 194J is applicable. So 194J may only legal, medical, engineering, architecture, technical consultancy profession are covered. Therefore, any advocate, CA, doctor, engineer, architect, technical consultancy, interior decorator or film artist जो profession में covered है, only their services are liable for TDS under 194J. So here 194J में teaching profession या अन्य कोई profession, any other profession is not covered here. Then in any such profession which is not covered under this, then you are not required to deduct TDS under 194J and you are required to deduct TDS in that case under 194C only. Another very important thing जो हमें यहाँ ध्यान रखना चाहिए, कई बार हमारे क्लाइंट्स ने किसी का TDS अगर कम रेट से डिडक्ट किया या नहीं डिडक्ट किया या कोई फिक्स एसेट परचेज की, उस पर उनको क्या डेप्रिसिएशन डिसअलाउ होगा? नो, देयर इज अ जजमेंट ऑफ ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट इन द केस ऑफ PCIT वर्सेस टेली सॉल्यूशन इन विच दे हैव मेंशन्ड दैट अगर किसी ने कोई फिक्स एसेट परचेज की है उस पर उन्होंने डेप्रिसिएशन, उन्होंने TDS डिडक्शन नहीं किया है,
तो क्या उसमें 30% अमाउंट डिसअलाउ होगा डेप्रिसिएशन का? नो, depreciation is not an expenditure, so there cannot be any disallowance even if no TDS has been done by our client. जैसा 44 AD में तो ऑलरेडी उन्होंने लिखा है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 28 to 43C। तो अगर आपने कोई फिक्स एसेट पे या एनी डेप्रिशिएबल एसेट पर आपने TDS काटना भूल गए हैं कॉन्ट्रैक्ट पर भी, तो इवन दो उसमें ये 30% का डिसअलाउंस नहीं होगा, क्योंकि 28 to 43C को उन्होंने 44 AD से बाहर रखा है। किंतु अगर कोई हम ऑडिट भी करते हैं और उसमें 44 AD के अंदर या 44 ADA में डेप्रिसिएशन प्रोपोर्शनेट डिसअलाउ होगा? नहीं, इवन दो इट विल नॉट बी डेप्रिसिएशन में प्रोपोर्शनेट डिसअलाउंस नहीं होता है, किंतु 40A सबसेक्शन 3 में डिसअलाउंस होता है अगर उसका ऑडिट होता है तो, बिकॉज डेप्रिसिएशन इज एन अलाउंस एंड इट इज नॉट एन एक्सपेंडिचर। देन अनदर मोर थिंग, अगर हमारे कोई क्लाइंट चाहे वो इंडिविजुअल HUF है जो 44 AD में अपना ITR फाइल करते हैं या 44 AE में अपना ITR फाइल करते हैं, या कोई स्टूडेंट है या कोई सर्विस क्लास एम्प्लॉय है, सैलरीड एम्प्लॉय है, बिकॉज यहाँ वो चीज रिलीवेंट है। इसलिए कई बार हमारे जो क्लाइंट है जो ट्रक ऑपरेटर हैं, उनके पास 10 से कम ट्रक है, तो हमने उनका 44 AE में ITR फाइल कर दिया, या कोई सैलरीड एम्प्लॉय, किंतु वह बट that person has made a payment exceeding ₹50 lakh per year to any civil contractor for his residential building or commercial building construction। कोई व्यक्ति अपने शॉप का या अपनी बिजनेस प्रीमाइजेस का इंटीरियर डेकोरेटर से फर्नीचर बनवाता है, या सिविल कॉन्ट्रैक्टर से फर्नीचर बनाता है, या कोई सैलरीड एम्प्लॉय अपने पर्सनल रहने के लिए रेसिडेंशियल बेंगलो बनवाता है, तो क्या वो बेंगलो बनाने के लिए उस व्यक्ति ने अगर एक ईयर में 50 लाख से अधिक का पेमेंट किसी को किया है, वेदर ही इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट TDS? यस, क्योंकि हमने TDS में यही पढ़ा है कि 1 करोड़ से अधिक का अगर किसी इंडिविजुअल HUF का टर्नओवर, देन ओनली ही इज रिक्वायर्ड फॉर TDS। बट इफ एनी पर्सन हु इज एन इंडिविजुअल HUF and he is not covered under provision of 194C, H or J, but he has made payment to civil contractor exceeding ₹50 lakh in a year, then he is required to deduct TDS at the rate of 5%. Even if he is covered under 44 AD, or even if he is a salaried employee or a student. To whom the audit provisions are applicable? Now I will try to finish within next 10-15 minutes. To whom the tax audit provisions are applicable? Tax audit provisions are applicable to every person who is carrying on a business or profession. Who are the person? The person includes individual HUF company, firm, LLP. So any person who is an individual HUF company, firm, LLP and carrying on a business or a profession, they are required to get their books of accounts if their turnover exceeds the certain limits. If their turnover in business exceeds ₹1 crore, or if he is a professional and his turnover exceeds ₹50 lakh, they will have to get their books of accounts audited from a chartered accountant and have to file ITR within due date specified under 139 subsection 1 for the specified tax audit cases. If a person is engaged in a business and he opts for 44 AD, then up to turnover of ₹2 crore, he is not required to get his books of accounts audited. If he is a professional and opt for the 44 ADA, then up to 50 lakh, he is not required to get his books of accounts audited. No tax audit up to 10 crore rupees from AY 2021. From the financial year 2021, that means assessment year 21-22, limit of ₹10 crore is there for specified businessmen. If any aggregate of all amount received, including amount received for sale, turnover, or gross received during the previous year in cash, does not exceed 5% during the year, and aggregate of all payment in cash is not in excess of 5% of all payments made during the year, then such person carrying on a business will not be required to get his books of accounts audited under 44 AD up to the turnover of ₹10 crore. Bank payment and receipt otherwise than through account pay check or draft will also be deemed to be cash. So therefore, say for example, any person who is engaged in a business of share transaction or F&O, futures and option में या share के transaction में अगर कोई व्यक्ति business में है, then
वहां उस बिजनेस में more than 95% of the transaction are in the check. There are no cash transaction in the stock market. Therefore, whether up to 10 crore turnover, he is not required to get accounts audited. Yes. In that case, up to turnover of rupees 10 crore, he is not required to get his books of accounts audited. If any person fails to get his books of accounts audited for any previous year, then the assessing officer may direct that such person shall pay a penalty which is equal to 1/2% of the total turnover or rupees 1.5 lakh, whichever is less. So अगर 44 AD में कोई व्यक्ति कवर्ड है, बाद वाले साल में उन्होंने ऑडिट नहीं कराया, फिर भी 8% से कम नेट प्रॉफिट डिक्लेयर किया, देन उन्हें 271B में 44 AB का वायलेशन की 1/2% या 1.5 लाख whichever is less की पेनल्टी लग सकती है. कैश पेमेंट रेस्ट्रिक्शन, अगर कोई 44 AD फॉलो करता है उसके लिए कैश पेमेंट का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. बट अगर वो व्यक्ति 44 AD फॉलो नहीं करता है उसके लिए 10,000 रुपीज का कैश पेमेंट का रेस्ट्रिक्शन इज देयर. एंड इन केस ऑफ द गुड्स कैरेजेस दैट लिमिट ऑफ रुपीज 10,000 इज रिप्लेस्ड बाय 35,000. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हम बिना ऑडिट के क्लाइंट्स के ITR फाइल करते हैं, किंतु उस व्यक्ति को अगर कहीं से ऐसे व्यक्ति से पेमेंट मिल रहा है, ही इज रिसीविंग पेमेंट फ्रॉम ए पर्सन हु इज कवर्ड अंडर ऑडिट and he has failed to deduct the TDS under 194C or 194J. In that case, whether क्या उसका 30% अमाउंट डिसअलाउ होगा? यस. अगर रिसिपिएंट ने, मेनी टाइम्स हम TDS डिडक्ट करना भूल जाते हैं और हम ये सोचते हैं कि फॉर्म 26A इज देयर, उसमें अगर रिसिपिएंट ने अपना ITR 139(1) की ड्यू डेट में फाइल कर दिया है तो हम रिसिपिएंट के से 26A में डिक्लेरेशन ले सकते हैं और CA उसको सर्टिफाई कर सकता है. बट अगर जिसको हमने पेमेंट किया वो ऑडिट में कवर्ड नहीं था, ही वाज अ सिविल कॉन्ट्रैक्टर एंड हिज टर्नओवर वाज लेस देन रुपीस 2 करोड़, ही फाइल्ड हिज ITR फॉर असेसमेंट ईयर 2021-22 आफ्टर 31st December 2021. इन दैट केस, उसके केस में 139(1) की ड्यू डेट के बाद अगर उसने अपना ITR फाइल किया है तो 30% अमाउंट हमारा जिसने फेल्योर किया उसका डिसअलाउ हो जाएगा, फिर नेक्स्ट ईयर में वो पेमेंट अलग होगा. सो दिस इज ए लॉन्ग डिस्कशन ऑल्सो. देन अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, प्रमोद पंडा साहब ने जो शेयर ट्रांजेक्शन की बात कहा था, सो दैट आई विल डिस्कस हियर कि शेयर ट्रांजेक्शन के केस में टर्नओवर किसे कहा जाता है. एज पर गाइडेंस नोट ऑन टैक्स ऑडिट इशूड बाय द ICAI, इन केस ऑफ द स्पेक्युलेटिव ट्रांजेक्शन इंट्राडे, टर्नओवर इज टू बी कैलकुलेटेड बाय एडिंग द प्रॉफिट एंड लॉसेज. शेयर्स के केस में जैसे मान लिया सेम डे, आज सुबह किसी ने 10 लाख रुपए के शेयर खरीदे, 10 लाख के शेयर सेम डे 2 घंटे के बाद विद इन सेम डे उन्होंने 10 लाख और 25,000 में बेच दिए. ओनली देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज 25,000. अनदर एक और कंपनी के शेयर उन्होंने खरीदे 8 लाख रुपए में, उनको उन्होंने बेच दिया 7,60,000 में, यहाँ 40,000 का लॉस हो गया. तो लॉस और प्रॉफिट की दशा में जो 40,000 का लॉस हुआ है और 25,000 का प्रॉफिट हुआ, इन दोनों को हमें ऐड करना है इग्नोरिंग द माइनस साइन. सो द टर्नओवर विल बी ओनली रुपीज 65,000. लॉस एंड प्रॉफिट इज टू बी क्लब्ड इग्नोरिंग द माइनस साइन. हियर वहां उनका टर्नओवर 8 लाख और 10 लाख मतलब 18 लाख नहीं होगा, नहीं तो ऐसा टर्नओवर 100, 200 करोड़, 1000 करोड़ हो जाएगा. सो CA इंस्टीट्यूट के गाइडेंस नोट में ये बताया है, only the profit and loss is to be clubbed ignoring the minus sign, that will only be the turnover. And if such turnover is not more than 2 crore, then such person can opt for section 44 AD also. तो लॉस और प्रॉफिट का टोटल अगर 1 करोड़ 80 लाख है, then he may go for 44 AD. या 1 करोड़ से अधिक है तो फिर उसे ऑडिट करवाना आवश्यक होगा. इफ ही इज नॉट गोइंग टू ऑप्ट फॉर 44 AD, देन ऑडिट लाइबिलिटी विल कम इफ हिज सम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज मोर देन रुपीज 1 करोड़. In case of the delivery based share transaction and securities, the aggregate of sale price of the whole year will be the turnover to be determined for the purpose of 44 AD. अगर हमारा जो असेसी है, जो क्लाइंट है, उनका शेयर का ट्रांजेक्शन है बट ही इज डूइंग ट्रेडिंग इन द डिलीवरी बेस्ड ट्रांजेक्शन,
तो डिलीवरी बेस में आज खरीदा, 4 दिन बाद बेचा या पुराने स्टॉक में से सेल कर दिया, इन दैट केस the total sale value will be treated as a turnover, and if that total sale value is more than rupees 1 crore, then he will have to get his books of accounts audited, or up to the turnover of rupees 2 crore he may opt for the section 44 AD. Then he will not be required to maintain any books of accounts if he has opted for section 44 AD. F&O. F&O transaction may be same thing is there. In case of the futures, only the profit and loss is to be added ignoring the minus sign. So only positive and negative differences. अगर आपने कोई फ्यूचर्स का ट्रांजेक्शन आज किया है 10 लाख रुपए का, उसको आपने 20 दिन के बाद स्क्वायर अप कर दिया 10,25,000 में, तो ओनली 25,000 का जो प्रॉफिट हुआ उसी को टर्नओवर माना जाएगा. That will only be treated as your turnover. The premium received by a trader while selling the option. ऑप्शन के केस में भी ओनली जो प्रीमियम रिसीव्ड हुआ है उसी को टर्नओवर माना जाएगा. Therefore, the whole amount will not be treated as a turnover. Only the premium received will be treated as a turnover. And in case of the futures, only the profit and loss will be treated as a turnover, ignoring the minus sign. और उसका 44 AD अगर 1 करोड़ से कम है तो 44 AD में, 2 करोड़ से कम है तो भी 44 AD में. अगर लॉस है और 1 करोड़ से अधिक का टर्नओवर है तो भी हम 1 करोड़ से अधिक का टर्नओवर है तो हमें ऑडिट कंपलसरी है. 1 करोड़ से कम का टर्नओवर है, देन ही कैन गो फॉर 44 AD, और ही may have to fill the profit and loss account and balance sheet without getting books of accounts audited. कमीशन एजेंट के केस में टर्नओवर क्या होगा? कमीशन एजेंट के केस में जो कमीशन इनकम आती है ओनली दैट इज ट्रीटेड एज ए टर्नओवर. स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन का मैंने ऑलरेडी बता दिया. स्पेकुलेटिव मींस जो इंट्राडे ट्रांजैक्शन होते हैं विदाउट डिलीवरी, अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ है तो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस विल ओनली बी ट्रीटेड एज द टर्नओवर, एंड होल सेल प्राइस एंड होल ऑफ द परचेज प्राइस विल नॉट बी ट्रीटेड एज ए टर्नओवर, इवन इन केस ऑफ द कमोडिटी ट्रांजैक्शंस. Then another thing which we must keep in mind, अगर हमारे, हालांकि ये 44 AD से रिलेटेड नहीं है, बट रूटीन वे में हमारे क्लाइंट्स जो गलती करते हैं कि अगर हमारा कोई क्लाइंट है जिसका रेस्टोरेंट है, उन्हें अगर किसी सिंगल व्यक्ति से 50,000 से अधिक का कैश पेमेंट रिसीव हो रहा है और उसका टैक्स ऑडिट होता है, तो सिंगल व्यक्ति से 50,000 से अधिक का कैश पेमेंट रिसीव हुआ है, देन वी हैव टू ऑब्टेन फर्स्ट ऑफ ऑल द पैन नंबर एंड वी हैव टू रिपोर्ट दैट ट्रांजैक्शन इन द टैक्स ऑडिट. और टैक्स ऑडिट के साथ साथ हमें फॉर्म 61 में एसएफटी में रिपोर्ट करना होता है. अगर 50,000 से अधिक का पेमेंट रेस्टोरेंट को चेक से प्राप्त हुआ, देन पैन नंबर इज नॉट रिक्वायर्ड. अगर हमने 50,000 से अधिक का किसी रेस्टोरेंट या होटल को पेमेंट रिसीव हुआ एंड दैट पर्सन डज नॉट प्रोवाइड यू द पैन नंबर, then you will have to file the SFT statement of financial transaction in form number 61A. Same in the case of the travel agency. Travel agency में 50,000 से अधिक का कैश पेमेंट है तो पैन नंबर रिसीव करना जरूरी है, अदरवाइज you will have to report in the SFT form. Then one more important thing, अगर किसी को, हमारे जो कस्टमर्स क्लाइंट्स हैं 2 लाख से, चाहे वो 44 AD में कवर्ड है, even if our any of the client is covered under 44 AD, they must have to obtain the PAN number of the buyer and seller if their single transaction is more than rupees 2 lakh. 2 लाख से अधिक में पहली बात तो हम कैश रिसीव नहीं कर सकते, बिकॉज 269 ST में इक्वल टू द अमाउंट ऑफ कैश रिसीव्ड पेनल्टी लग जाएगी, तो 2 लाख से अधिक का कैश रिसीव्ड करना अलाउड नहीं है. और अगर हमारा क्लाइंट बिल्डर है, इन केस ऑफ द रियल एस्टेट ट्रांजेक्शन, सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में 20,000 से अधिक के केस में आवर क्लाइंट कैन नॉट रिसीव एनी कैश पेमेंट, even if he is covered under, he is not covered under audit, तो भी उसे 20,000 से अधिक के दशा में he cannot receive any cash payment, otherwise equal to the amount of cash received he may be liable for penalty under section 271D. सेम अगर 2 लाख से अधिक का हमने कोई गुड्स सेल किया है या सर्विसेज प्रोवाइड किए तो ऑन द इनवॉइस सेलर एंड बायर का पैन नंबर मेंशन करना कंपलसरी है. If he does not mention the PAN number, then per bill, per invoice, he may be liable for penalty of rupees 10,000 under section 272 capital B.
ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। पीपीटी आपको रंजीत पाड़ी साहब को मैंने दी है, वो ऑलरेडी आप सभी को प्रोवाइड कर देंगे। ये चर्चा ऑलरेडी हम कर चुके हैं कि अगर 1 करोड़ से कम है तो क्या P&L बैलेंस शीट भर के ITR फाइल हो जाएगा? यस, देन 44 AD इज नॉट रिक्वायर्ड। सो दीज वर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट इश्यूज regarding the 44 AD and 44 ADA, 44 AE and 44 AA. This was some of my views on this thing. So thanks a lot to all of you for providing me the opportunity to interact with all of you. And अगर अब किसी की कोई queries हो, all are welcome. Pramod Bhaina, can we please now take up the questions? Thank you, Mehta sir. We will now go for a question and answer session. Members are requested. I have already requested. You can put the question either in the chat box or in the WhatsApp. Or if anybody is interested, they can raise a what is called. You can raise your hand so that Pramod Bhaina can invite you. Anyone has question? Yes, Sarathi sir and Purno Hota, both of them have questions. You can unmute and ask your questions. Go ahead, sir. Yes, sir. बोलिए सर, बोलिए आपका क्वेश्चन। आपका आवाज नहीं आ रहा पार्थ सारथी साहब, आपका माइक अनम्यूट नहीं है क्या? आवाज नहीं आ रहा है। हाँ, अब बोलिए सर। आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रहा है। यस, थैंक यू। गुड इवनिंग मेहता साहब। यस, गुड इवनिंग। मेरा एक क्वेश्चन है जो हमारे डिस्कशन में कवर नहीं हुआ है। Why limited liability partnerships are exempted from this presumptive taxation? What is the intention of the legislature? Yes, sir. देखिए, पहले LLP ड्यू टू ओवरसाइट इसमें कवर्ड था, पर 44 AD में ओनली उन्हीं को उन्होंने बाहर किया है, those who are not required to maintain the books of accounts under any other law also. So yes, the LLP and companies are required to maintain the books of account as per the Companies Act 2013. तो कंपनीज एक्ट के अनुसार LLP एंड प्राइवेट लिमिटेड को चूंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना कंपलसरी है, सो दे हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम 44 AD. दिस इज ओनली रीजन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इट्स क्लियर ना? थैंक यू सर। एनी अदर क्वेश्चन? पूर्ण हेलो, गुड इवनिंग मेहता सर। बोलिए। सर, मेरा एक क्वेश्चन है। मेरा एक क्लाइंट है जिसका टर्न रियल एस्टेट व्यापार कर रहे हैं और उसका ट्रांजैक्शन 3 करोड़ 40 लाख से। हाँ, ठीक है सर। यस। और क्या मैं उसको 44 AD में दिखा सकता हूँ 8% के हिसाब से? नहीं, अगर टर्नओवर 2 करोड़ से अबव है देन यू कैन नॉट गो फॉर द 44 AD। अगर उनका 3 करोड़ 40 लाख का जो ट्रांजैक्शन है पूरा चेक से है, मोर देन 95% ट्रांजैक्शन चेक से है, ऑल रिसिप्ट एंड ऑल पेमेंट आर थ्रू चेक एंड अकाउंट पे चेक, देन ओनली ही कैन 10 करोड़ तक, फिर उनको ऑडिट का जरूरत नहीं है। पर 44 AD के लिए लिमिट इज ओनली 2 करोड़। नहीं सर, उसका क्या कि जो सेलिंग का है वो सेलिंग चेक ट्रांजैक्शन है, पर परचेज जो मटेरियल किया है उसका चेक ट्रांजैक्शन नहीं है, कैश में ट्रांजैक्शन है। तो फिर उसको ऑडिट तो कंपलसरी है, देन ही ऑडिट इज कंपलसरी। वो 10 करोड़ का जो रिलैक्सेशन है उसमें भी कवर्ड नहीं होगा। सो ऑडिट इज कंपलसरी इफ टर्नओवर इज मोर देन ₹2 करोड़। अच्छा सर, और से कम है देन ओनली ही कैन गो फॉर द 44 AD। ओके सर, थैंक यू। और एक सर क्वेश्चन है, हमारा अभी 44 AD में जो ITR 4 है इसमें दिखा रहा है LIC एजेंट और एक कोड है नॉन LIC एजेंट। क्या हम LIC एजेंट को ITR 4 में दिखा सकते हैं? नो, LIC एजेंट इज ए कमीशन एजेंसी इनकम, सो नो अकाउंट्स केस में LIC एजेंट इज ए कमीशन एजेंट। यस सर। तो कमीशन एजेंट इज नॉट कवर्ड अंडर 44 AD। तो उसको आपको नो अकाउंट्स केस में आपको फाइल करना पड़ेगा, वो 44 AD में नहीं जाएगा। नो अकाउंट्स केस में अगर उनका ग्रॉस रिसीव 25 लाख से कम है
तो आप उसको नो अकाउंट केस में ले जा सकते हैं। नहीं, नो अकाउंट में ITR में तो 25 लाख से अधिक ग्रॉस रिसिप्ट है तो उसका P&L बैलेंस शीट आपको फाइल करना और ITR 3 फाइल होगा उसमें, उस केस में ITR 3 फाइल होगा। अच्छा अच्छा, तो नॉन LIC एजेंट भी ITR 3 में ITR करना 3 पड़ेगा में जाना पड़ेगा। सर। एक प्रोविजन है, मोर ऑफ द मेंबर, हमारा मेंबर्स को भी मालूम होगा क्या है कि वो इसमें एक जो ITR 4 है इसमें 2 कोड है, एक LIC का एजेंट का और एक नॉन LIC एजेंट का कोड है। तो इसमें हम दिखा कर भी ITR 4 फाइल नहीं कर सकते हैं सर। ITR 4 भले आप फाइल कर सकते हैं पर ITR 4 में आप 44 AD में नहीं जा सकते। अच्छा, ITR 4 में आप 44 AD का ऑप्शन यूज नहीं करेंगे। 44 AD ओनली ट्रेडर को अवेलेबल है। ITR 4 में भी आप LIC एजेंट और नॉन LIC एजेंट में आप कमीशन इनकम बता सकते हैं। हाँ सर, और एक थर्ड क्वेश्चन है सर मेरा, प्रेसिडेंट सर, कैन आई आस्क? यस ऑब्वियसली, आराम से बोलो। थैंक यू सर। सर और एक क्वेश्चन है सर, मेरा एक ट्रक ओनर क्लाइंट है, उसका 4 ट्रक है, 4 ट्रक का टर्नओवर 16,000 पर ट्रक है। उसका यानी क्या बोलते हैं उसका, वो कैरेज कैपेसिटी है 16 टन। 16 टन, हाँ 16 टन है, वो 4 ट्रक का है सर। यस। क्या उसका इनकम को मैंने 44 AD में ले सकता हूँ या नहीं सर? नहीं, ट्रक ओनर इज नॉट कवर्ड अंडर 44 AD। ट्रक ओनर को या तो 44 AE में जाएगा, ट्रक ओनर 44 AE में जाएगा 1000, तो 16,000 रुपए पर मंथ का इनकम बताना पड़ेगा पर ट्रक। 16,000 पर मंथ पर ट्रक। सो फॉर दिस ऑल 4 ट्रक ही विल हैव टू शो इनकम ऑफ 1,92,000 into 4 फॉर द होल ईयर अंडर 44 AE। अगर वो 44 AE में इतना इनकम नहीं बताता, कम बताना चाहता, देन ही विल हैव टू गेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड। सर एक क्या हुआ है कि जो कोविड के टाइम में वो 6 मंथ टोटली ट्रक बंद था सर। ट्रक बिजनेस टोटली बंद था सर। तो ओनली ऑप्शन इज द ऑडिट, ओनली ऑप्शन इज द ऑडिट। आप उसको 12 मंथ्स को 6 मंथ लिख नहीं सकते। इनकम टैक्स में ऐसा नहीं कि आप 6 मंथ का इनकम बता दिया, 6 मंथ लेस कर दिया। वो 6 मंथ जब हो सकता है जब आपने 6 मंथ के बाद ट्रक को सेल कर दिया। ट्रक अगर आपके पास ऑनरशिप रहा फॉर द ऑनरशिप पीरियड, यस सर, एक्ट में जो लिखा है द ऑनरशिप, आपका ऑनरशिप अगर 12 मंथ है तो 12 मंथ का इनकम बताना है, चाहे वो ट्रक बंद था, बरसात था, एनी फॉर एनी रीजन, अदरवाइज यू हैव टू ऑडिट। ओहो, ओके ओके ओके, थैंक यू सर। राजेश सर, अभी जो 44 AE में जो डिस्कशन कर रहे थे, तो कॉल टाइम के एक्सेस जो व्हीकल है उसमें जो 1000 पर टन बता रहे हैं, तो अगर 30 टन व्हीकल है तो हम कैसे 30,000 लेंगे या ऑल लेडन वेट का हिसाब से लेंगे? 30 टन व्हीकल है, ट्रक है, अच्छा, उसका हाँ कितना लेंगे हम इनकम? 30,000 रुपीज, 30,000 रुपीज पर मंथ का इनकम 30 टन। अगर कोई ग्रॉस व्हीकल वेट और ऑन लेडन वेट, अनलेडन का वेट नहीं लेना है। अनलेडन वेट आपको कभी भी काम नहीं आएगा। अनलेडन वेट नेवर। ग्रॉस व्हीकल वेट मतलब इंक्लूडिंग गुड्स और एक्सक्लूडिंग गुड्स? इंक्लूडिंग गुड्स, इंक्लूडिंग गुड्स, इंक्लूडिंग गुड्स। अनलेडन वेट कभी भी हमको 44 AE में काम नहीं आएगा। अनलेडन वेट जो वर्ड वहां पे लिखा है, दैट इज नॉट यूजफुल, दैट इज रॉन्ग। वो उन्होंने थोड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड लिखा है। ओनली ग्रॉस व्हीकल वेट इज टू बी कंसिडर्ड। ग्रॉस व्हीकल जो भी गुड्स के ज्यादा हायर हो जाता है। हाँ, ज्यादा होगा तो सो ओनली ऑडिट इज द ऑप्शन, ओनली ऑडिट इज द ऑप्शन, और अदरवाइज ओनली ग्रॉस व्हीकल वेट। सो अनलेडन वेट नहीं ले सकते। दे हैव नॉट गिवन टू चॉइस। देयर इज ए CBDT सर्कुलर क्लेरिफिकेशन ऑल्सो, हालांकि उसमें भी ज्यादा क्लेरिफाई सही नहीं किया, बट दिस इज द ओनली बेसिक थिंग। किसी भी ट्रक का आप RC कार्ड अगर आप देखेंगे, रजिस्ट्रेशन कार्ड आप देखेंगे, तो कार्ड पर ग्रॉस व्हीकल वेट लिखा होता है, उसका ही आपको पर मंथ इनकम लेना है। ताकि अदरवाइज अनलेडन वेट लेंगे तो अनलेडन वेट तो खाली ट्रक उसके अंदर कितना भी चलाएगा, सड़क भी खराब होगा देश का, तो सरकार को उसके लिए टैक्स चाहिए जितना लोड सड़क पे चल रहा है। फिर किसी का 30 टन ट्रक है, अगर उसका ग्रॉस व्हीकल वेट में गुड्स का वजन अगर डाल दिया, तो गुड्स बोलेगा साहब मेरा 30 टन का तो ट्रक है, पर मैं रोज 10 टन का ही माल लेके जाता हूँ, मेरा खाली ट्रक का वजन है 10 टन
और उस पे 10 टन तो 20 टन, जबकि वो 30 ले जा रहा, तो रोज रोज तो इनकम टैक्स चेक नहीं करेगा. सो दे हैव पुट ए स्टैंडर्ड थिंग एज पर द ग्रॉस व्हीकल वेट व्हिच इज मेंशन्ड इन द आरसी कार्ड. Regarding 4480, Shekhar Kumar, please go ahead with your question. ଭାଇନା ମୋର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଥିଲା ଯେ ଜଣେ ମୋର କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ର ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ ଅଛି, ସେ ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर रे से आउ 5 ट्रक कार करने लगै छी भाईना. अरे इंग्लिश में कुआ है. रंजीत जी आप बोल दीजिए. नहीं, आप समझ के एक बार आप मुझे हिंदी में बता दीजिए. लेट हिम स्पीक इन द लोकल वर्नाकुलर. वो हमारा ओडिया में लेट हिम स्पीक. Our chairman will translate it and he will put the question. Yes. Chairman sir, सर मेरा एक क्लाइंट का एक ही ट्रक है, वो ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर में वो एंगेज किया है, उसका और भी 4 ट्रक है, उसका नाम पे नहीं है और तो और किसी का नाम पे है, और वो ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर में वो दिया हुआ है सभी सप्लाई को, और उसको 94C में वो डिडक्ट हुआ है उसका टीडीएस. तो अभी सर मैं 44AE में दिखाऊंगा ना 44AD में उसको इनकम को दिखाऊंगा? देखिए वन थिंग, अगर वो एक ट्रक उसके खुद के नाम से वो 44AE में जाएगा. हाँ सर. और जो ट्रक उसके नाम से नहीं है उसका 194C में टीडीएस कटा, दोस ऑल विल बी कवर्ड अंडर 44AD. सर ये सब मिला के मैं ऑनरशिप कंपलसरी, ट्रक ऑनरशिप इज कंपलसरी. सर अगर मेरा कुछ ट्रक भी नहीं है तो मैं एंगेज किया हूँ ट्रक 44AD में वो सब दिखा सकता हूँ ट्रांसपोर्ट AD में. यस 44AD में जाएगा. सर और एक डाउट है, स्पेकुलेशन बिजनेस में आपने जो बोला कि परचेज लॉस और प्रॉफिट मिला के आप टर्नओवर में डाल देंगे. तो सर मैं अभी उसका डिडक्शन कौन से, अगर मैं उन दोनों को डाल दिया तो मेरा प्रॉफिट तो 1 करोड़ हो जाएगा, तो तभी मुझे डिडक्शन क्या क्या करना पड़ेगा उसमें से? डिडक्शन कुछ नहीं होगा ना, 1 करोड़ का आपका प्रॉफिट तो लॉस हो गया, वो जो ट्रांजैक्शन में आ गया, तो उसका बाद मेरा प्रॉफिट कैसे आएगा? नहीं, अगर आपको लॉस हुआ है तो लॉस हुआ है तो यू हैव ओनली 2 ऑप्शन. या तो लॉस हुआ है तो लॉस, मान लिया आपको 90 लाख का लॉस हुआ है, आपने जो टोटल लगाया ओनली लॉस का टोटल लगाया दैट इज 90 लाख. अब 90 लाख का या तो आप 8% प्रॉफिट डिक्लेयर कर दीजिए, अगर नहीं डिक्लेयर करते 90 लाख का लॉस आपको कैरी फॉरवर्ड करना है तो फिर आप अपना P&L बैलेंस शीट ITR में फाइल कर सकते हैं. तो सर मैं टर्नओवर कैसे डालूंगा? लॉस परचेज डाल के मैं यस दैट इज टर्नओवर. यस जो आपका लॉस है, जो आपका लॉस और प्रॉफिट दोनों का टर्नओवर आपको आपके ट्रेडिंग सेल्स में बताना है, बिकॉज़ सीएसटी का गाइडेंस नोट कहता है कि दैट इज योर टर्नओवर, लॉस एंड प्रॉफिट सम इज योर टर्नओवर. और सर प्रॉफिट है उसमें लॉस कैसे आएगा सर? मैं कैसे उसको माइनस क्या करूंगा? यस उसमें यस वन थिंग देखिए, एग्जांपल ले लेते हैं, 30 रुपीस का लॉस है सर और 60 रुपीस का प्रॉफिट है, तो आपको वन थिंग यू आर टू डू, लॉस को आपने 30 रुपीस इधर लिख दिया डेबिट में, 60 रुपीस का प्रॉफिट को आपने कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में लिख दिया, एंड अनदर 90 रुपीस का जो टर्नओवर वो डीम्ड टर्नओवर करके लिखना पड़ेगा, उसको आपको क्रेडिट में लिखना है पर कंसीडर नहीं करना है, उसको आपको कंसीडर नहीं करना. सो नेट इफेक्ट विल बी योर 30 रुपीस. अगर आप 44AD में जा रहे हैं तो 44AD में जा रहे हैं, या आप इसमें वो दैट आई हैव सम कैलकुलेशन देयर, वो कैलकुलेशन में रंजीत सर को दे दूंगा बनाकर, उसका मैंने एक एग्जांपल बना रखा है, तो रंजीत सर आपको सभी को फॉरवर्ड कर देंगे. ओके एक सैंपल ट्रेडिंग अकाउंट में दे दूंगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. मैं आपको सैंपल ट्रेडिंग अकाउंट भेज दूंगा, so that will be circulated to all of you. Okay, thank you sir. Sir, Biswajit, go ahead. Pramod sir, there is a question on the WhatsApp group. Biswajit to. Good evening sir. Yes sir, बोलिए. Sir, my name is Vishwajit Tripathi. Sir, my one of my client is a channel partner of the telecom businesses. Yes. His turnover is more than 2 crores, but he has received commission as 80 lakhs during the financial year 2021. But the commission is credited in the retailers, to the dealers, not to the channel partner, my client. ठीक है, वो 80 लाख उसको बैंक अकाउंट में कुछ कमीशन जमा नहीं होता है, बस वो 26S में उसका 80 लाख दिखाई देता है, जो 80 लाख एज ए कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम डिफरेंट टेलीकॉम कंपनीज. इसमें जो डायरेक्ट टू जो कमीशन जो जाता है, कंपनी वाला डायरेक्ट दे देते डीलर्स को, बट इसको अकाउंट्स में नहीं आता है. ये कैसे काम करना है सर इस कमीशन को? तो चैनल पार्टनर को अगर कमीशन नहीं मिला, कमीशन आगे डीलर को फॉरवर्ड हो गया, ये आपका कहना है ना? हाँ, यस.
और आपका जो चैनल पार्टनर है उसका टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा है या 2 करोड़ है ना, सो उसका जो टर्नओवर कमीशन इज 80 lakhs. सो पर टीडीएस आपके चैनल पार्टनर का डिडक्ट हुआ है? हाँ, यस सर. ओके, तो उसको ऑडिट में तो जाना होगा फर्स्ट थिंग. यस सर, इज डेफिनेटली. एंड 80 लाख रुपीस का कमीशन उसको अपनी इनकम में तो ऑफर करना पड़ेगा और इधर डेबिट करना होगा. P&L अकाउंट में डेबिट, कमीशन ट्रांसफर टू द पर्सन. क्योंकि अगर वो कमीशन को अपने टर्नओवर में नहीं बताएगा तो इनकम टैक्स रिटर्न से नोटिस आ जाएगा, क्योंकि टीडीएस का क्रेडिट भी उसको नहीं मिलेगा. अनदर ऑप्शन, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन विच इज अवेलेबल इन द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म, कि अगर वो कमीशन आपकी इनकम नहीं है, गलती से टीडीएस आपका कट गया है, तो जिस व्यक्ति की इनकम है उस व्यक्ति को आप अपने रिटर्न फॉर्म में एक कॉलम आता है, देयर इज ए कॉलम इन द इनकम टैक्स रिटर्न रिगार्डिंग क्लेम ऑफ टीडीएस, whether the TDS is credit is to be transferred to other person. So you may mention the PAN number of that person जिसको कमीशन दिया गया, because one important thing is also that the TDS credit can be claimed by only the person who has offered the income. तो अगर ये 80 लाख रुपए का इनकम ऑफर नहीं कर रहा है तो टीडीएस का क्रेडिट भी उनको ट्रांसफर होगा जो अपना इनकम में ऑफर कर रहा है, तो वो क्रेडिट भी उनको मिलेगा क्योंकि इनका इनकम नहीं है. So he will have to transfer. सर एक्चुअली चैनल पार्टनर्स को 80 लाख का बैंक अकाउंट में जमा नहीं है. फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड, तो इसलिए फिर जब बैंक अकाउंट में जमा नहीं है, देखिए नहीं, कंपनी वाले बार बार उनको लिखने से और कुछ कम्युनिकेशन करने से, if you pay to the commission or to the dealer or distributors, please you may deduct these things. They have never deduct these things. So they have deduct the TDS in the name of channel partners. Yes. ये कंपनी का मिस्टेक है. अब कंपनी को तो बहुत बिग कंपनीज आर देयर, वी कैन नॉट चेंज देयर रूल एंड प्रोसीजर. वो कंपनी का अपना खुद का सेल्फ मेड रूल एंड प्रोसीजर है. वो चैनल पार्टनर का टीडीएस काट रहा है, बट इट इज नॉट द इनकम ऑफ द चैनल पार्टनर. सो द ओनली थिंग इज दैट चैनल पार्टनर को अपना P&L में क्रेडिट डेबिट में ये कमीशन शो नहीं करना है, इसका टीडीएस क्रेडिट भी क्लेम नहीं करना है. He will have to transfer this credit to the person to whom this income has been offered. जिसको कमीशन जिसको गया है ये क्रेडिट उसको ट्रांसफर होगा, टीडीएस भी उसको होगा. सेक्शन 199 एंड रूल 37B में ये मेंशन है, और रिटर्न फॉर्म में देयर इज ए कॉलम आल्सो. दिस इज द ओनली बेस्ट वे. सो टीडीएस क्रेडिट कैन आल्सो नॉट बी क्लेम्ड बाय दैट पर्सन. दैट चैनल पार्टनर विल नॉट बी अलाउड टू क्लेम दैट क्रेडिट बिकॉज इट इज नॉट हिज इनकम. सपोज मैं क्लेम नहीं करूंगा और मेरा जो चैनल पार्टनर के डायरेक्ट जो डीलर्स है, डीलर्स का पान नंबर डालूंगा, और तो कंपनी वाले तो डिडक्शन, हम लोग तो फॉर्म 16 तो नहीं दे सकते उनको. नहीं, तो आपका टीडीएस भी कंपनी ने गलती से टीडीएस आपका काटा है, किंतु कंपनी ने इनकम किसको दिया है? डीलर को. हाँ, तो वो टीडीएस भी उसी का इनकम है. कंपनी ने 1 लाख रुपीस पर 5,000 का टीडीएस काट के 95,000 रुपीस किसको ट्रांसफर कर दिया? डीलर को. और 5,000 का क्रेडिट उन्होंने दे दिया आपको, चैनल पार्टनर को. तो जब 95,000 डीलर का इनकम है तो ये 5,000 इज आल्सो द इनकम ऑफ द डीलर. यस यस. सो थैंक यू. Okay, sir, one more question we have received in our WhatsApp group. Mehta sir. Yes sir, बोलिए sir. The member question is, the turnover for 1920 financial year was 90 lakhs, commission was 7 lakhs. The case was audited and return was filed for assessment year 2021. The current year 2021 financial relevant to assessment year 21-22, his turnover is 50 lakhs and commission received is 1 lakh. So his question is, can I opt for 44 AD? So in the previous year that was This was audited. This was audited. Okay. Previous so year. This was the first year of business? नहीं. उसके पिछले जो 90 लाख वाला टर्नओवर का ईयर था आपका असेसमेंट ईयर 2021, उसके पिछले 5 साल में कभी 44 एडी ऑप्ट किया? It has to be asked. Rabindra Kumar Sahu, are you there? Rabindra Kumar Sahu. Ravi. देखिए मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ जो पॉसिबल, व्हाट इज द पॉसिबल आंसर.
अगर 90 लाख का टर्नओवर जिस ईयर में था उसके पिछले 5 साल में कभी भी 44AD ऑप्ट नहीं किया, देन in the next year also there is no requirement of audit. Without P&L balance sheet, with P&L balance sheet and without audit you can file the ITR. नहीं सर, उनका अगर टर्नओवर एक्सीड नहीं किया होगा तो भी हम बिना ऑडिट में फाइल कर सकते हैं। टर्नओवर अगर 1 करोड़ से कम है, 1 करोड़ से अधिक में तो ऑडिट कंपलसरी है। हाँ, नहीं अभी क्या है, वो पार्टनरशिप फार्म उनका 10 लाख से 15 लाख 20 लाख ऐसे टर्नओवर आता है, लेकिन हम उनको ऑडिट करते हैं, तो ऑडिट जरूरत नहीं है, ऑडिट जरूरत नहीं। अगर उनका टर्नओवर 1 करोड़ से कम है, टर्नओवर 1 करोड़ से कम है तो ओनली P&L बैलेंस शीट फाइल कर सकते हैं। अगर उन्होंने पिछले 5 साल में 44AD फॉलो नहीं किया तो फॉलो तो किया है ना। अगर 44AD फॉलो किया है तो 5 साल तक ऑडिट होगा, उसके बाद के फिर 6ठे साल से आप वापस P&L बैलेंस शीट फाइल कर सकते हैं, फिर ऑडिट जरूरत नहीं है इफ देयर टर्नओवर इज लेस देन ₹1 करोड़। In the instant case, the turnover for the relevant immediate assessment year is less than 1. टर्नओवर 1 करोड़ है और उसके पिछले 5 साल में 44AD फॉलो नहीं किया है, इसलिए करंट ईयर में 50 लाख का टर्नओवर में भी ऑडिट की जरूरत नहीं है, 44AD की जरूरत नहीं है, ओनली P&L बैलेंस शीट इज रिक्वायर्ड। Yes, Jivanu, go ahead with your question. Jivanu, please unmute and go ahead with your question. Jivan Das, please unmute yourself and go ahead with your question. सर ओके सर। सर मेहता सर नमस्ते। जी नमस्ते सर। सर मेरा एक क्लाइंट है, मैं सर ITR 3 में LIC एजेंट का फाइल कर रहा था। हाँ। सर उसका इनकम 4 लाख से बिलो था LIC एजेंट का। हाँ। ITR 3 में मैं फाइल कर रहा था। उसका कोड था सर 13011। सर इस साल क्या किया, ITR 4 में सपोज मैंने फाइल कर दिया, शोइंग कोड 13018 44AD में फाइल कर दिया, तो इसको क्या रिवाइज करना पड़ेगा ITR 3 में या ऐसा एक्सेप्ट हो जाएगा सर? देखिए, क्योंकि वो LIC एजेंट है उसका TDS कटा होगा 194H में होगा सर, तो आपको रिटर्न रिवाइज करना होगा, क्योंकि CPC बेंगलोर उसको रोक लेगा, वो कहेगा 194H इज नॉट कवर्ड अंडर 44AD, therefore you will have to revise your return. सर आई हैव टू फाइल ITR 3। ITR 3 में आप, चूंकि आपका ग्रॉस रिसीव 25 लाख से कम है इन केस ऑफ इंडिविजुअल, सो यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू, आप P&L बैलेंस शीट नहीं करेंगे तो भी चलेगा, नो अकाउंट्स केस में भी आप ITR फाइल कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। नो अकाउंट्स केस में पिछले साल सर डिफेक्टिव नोटिस इश्यू हुआ था। However, defective return notices, they are not allowed. They are not allowed to issue any defective return notices, but they are issuing. They have no power. Only jurisdictional AO can issue defective return notices at present. Any more question? Yes, sir. Pramod, I got a question. तो रात 9टा पर्यंत बसते ठीक है। This will be the last question. Yes. ये सर रिगार्डिंग जो 45 जो ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर के लिए जो बोला था, SCC का एक व्हीकल है, वन व्हीकल है, लेकिन टोटली ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस के लिए यूज किया है, तो उसके साथ जो दूसरा लोगों का व्हीकल भी यूज करता है। आप बोले जो खुद का व्हीकल का 45 में लेना है, बाकी 45 तो हम कैसे सेग्रीगेट करेंगे? अगर हम पता नहीं चलेगा तो हम सेग्रीगेट करना भी मुश्किल हो जाएगा। उसका टर्नओवर कैसे निकलेंगे? जो खुद का गाड़ी का व्हीकल का टर्नओवर वहां से ग्रॉस टर्नओवर से कैसे उसको सेग्रीगेट करेंगे? तो इसीलिए प्रॉब्लम होगा। अगर टोटली हम 4480 में ले लेंगे तो क्या प्रॉब्लम? देखिए, अगर आपने आपका ट्रक में 44, जैसे कई बार 26S में भी आपका इंफॉर्मेशन आ सकता है, आपने अगर डिक्लेरेशन दे दिया 10 से कम ट्रक है, इवन दो सेक्शन 194C सबसेक्शन 6 का जो भी इंफॉर्मेशन है वो 26Q में विदाउट TDS इंफॉर्मेशन फ्लैग करना पड़ता है। तो उधर अगर आपके रिटर्न में 26S में आएगा तो इनकम टैक्स से नोटिस आएगा कि आपने खुद के ट्रक का इनकम को 44AE में ऑफर नहीं किया।
अगर आपका सारा टर्नओवर 194C में आ रहा है या 26S में आपका 194C, गुड्स कैरिज में कोई इनकम नहीं आ रहा है, गुड्स कैरिज में नहीं आ रहा, ओनली 194C में आ रहा, देन ओनली यू कैन गो फॉर द 44AD, अदरवाइज यू कैन जो 194C में आ रहा है, देखा रहे 26S में, उसमें खुद का भी व्हीकल का भी इंक्लूड, बट दैट इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द रूल, लॉ के अनुसार नहीं है। आप 44AD में जा सकते हैं, बट लॉ वो आपको सेग्रीगेट करना होगा, आपको अपना खुद का जो भी पेमेंट मिलता है उसके लिए एक सेपरेट बैंक अकाउंट खोलना होगा खुद के ट्रक के लिए, दिस इज ओनली प्रैक्टिकल वे। और जो दूसरे 4 ट्रकों का हिसाब है जिसमें आपके पास खुद का ट्रक नहीं है, खुद का ट्रक नहीं है, दूसरों का आप चला रहे हैं, तो वो 194C में TDS आ रहा, उसके लिए आपका अलग बैंक अकाउंट होना चाहिए, खुद के ट्रक के लिए सेपरेट बैंक अकाउंट, दिस इज द ओनली वे आउट। तो खुद के जो ट्रक है वो 44A में जाएगा। पेमेंट करते हैं तो सेपरेट नहीं करके देते हैं ना, तो इंक्लूड कंसोलिडेटेड दे देते हैं, तो इसमें प्रॉब्लम होता है। No, that you will have to maintain. At least you will have to maintain separate. आपको अपना ग्रॉस रिसिप्ट तो 44AD में बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं रखना है, पर आपको ग्रॉस रिसिप्ट तो आपको मालूम होना चाहिए, ग्रॉस रिसिप्ट का ही तो 44AD होगा। तो आपका जो 44AD में क्वालिफाइंग ग्रॉस रिसिप्ट है, दैट यू योरसेल्फ हैव टू वर्क आउट। Thank you. I think we have all questions asked by the members. I think there is no other questions. No more questions. Ajit, now I will request, I'm giving out the proceedings to President to go ahead with further proceedings. Thank you so much, Pramod sir, for the nice moderation. And special thanks to Sushil Patnaik for such a wonderful introduction of a wonderful person. Thank you so much. Rajesh sir, kindly stay with us for some more minutes. Friends, let me inform you one thing. If you all remember, we had an incident very recently with the additional commissioner of, the joint commissioner of sales tax South Zone. We had been to him, but he didn't meet us. So say upare gote issue heitala, and after regular follow-ups, that officer has been instructed to go on leave, and the present additional commissioner of Ganjam range has been given the charge. तो एबे जेति कि हमरो अपील गुडा को एडमिट हेई नथिला बा रीअसाइन्ड हेई नथिला, सेई कामटा आजिठु आरंभ हे गला। तो बोधे हमरो मेंबर मानकर जो गुडा को भी जीएसटी अपील पेंडिंग थिला, आजि गुडाय लोकंकर अपील रीअसाइन्ड हेई जाईची आ गुडाय अपील एडमिट भी हेई जाईची। तो काइंडली गो थ्रू द सिस्टम। This is for the information of our members. Now may I request our Vice Chairman Direct Taxes Committee, Sri Parthasarathi sir, to kindly present the vote of thanks. Sarthi sir, please. Thank you, President Ranjit. First of all, I should thank Mr. Sushil Patnaik for introducing us a wonderful person, a wonderful speaker, and a very highly knowledgeable person like Rajesh Mehta Sahab to our organization, to our Tax Bar Association. And as we all can see, we all feel right now, still the feelings are very warm, and its hangover will continue for some more days. Wonderful, wonderful analysis of the presumptive taxation. Not only that, he touched upon many more other important provisions of income tax law. From the profile of Mr. Rajesh Mehta, I was seeing that he has almost digested every chapter of income tax law and procedure. And he has given his intelligence on various platforms, and hundreds, perhaps thousands of people are benefited from his analysis, analytical speeches. And today's enlightenment given by him is for the first time, and hopefully in future also, he will enlighten us on various other provisions, and specifically the confusing provisions of income tax law, which is the most confusing law of India. Everyone gets confused while reading some provisions of income tax unless
an intellectual person, a well-read person like Mr. Rajesh Mehta Sahab explains them, they will not be clear. As we all know, our income tax professionals family all over India is growing by the day. Each year, many advocates, chartered accountants, and cost accountants are joining this profession and joining various tax bar associations throughout India. And seniors like Mr. Rajesh Mehta Sahab are like teachers to all the youngsters as well as seniors for whom there is some understanding, some difficulty in understanding some provisions of law. We are, on behalf of Tax Bar Association Berhampur, extremely thankful to you, Mr. Rajesh Mehta Sahab. आप हमारे साथ फिर मुलाकात हम सबका होगी और आप कुछ अदर प्रोविजंस के बारे में हम लोगों को बताएंगे. And we are extremely grateful to you. Thank you all. Sure, sir. Sure. Surely ready. Thank you so much, Parthasarathi sir, for this fantastic presentation of vote of thanks with your damdar voice and damdar words also. Thank you, Ranjit. Friends, I once again thank our speaker, Rajesh Mehta sir, for giving his valuable time and tips to us on this subject. Friends, after hearing Rajesh Mehta sir, you must have observed that two of his qualities are his humility and wisdom, which inspires a keen interest to have him amongst us again and again. Sir, we would love to invite you again and again in our suitable sessions and hopefully shall hear a yes from you. Thanks from the bottom of our hearts. Thank you so much, sir. Now the meeting is adjourned. We can have some chit chat, sir. We can have some chit chat. You can join us for a chit chat. बापे मोटी की कथा बाबू चाहूँगी राजेश मेहता सर को तो. हाँ, now the chit chat is on. You can take leave of you. मेहता सर नमस्कार. Okay, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much for joining. नमस्कार. हाँ सर. अच्छा मेहता सर अभी तो मीटिंग खत्म हो गया है. थोड़ी मीटिंग के बाहर के बारे में मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ. क्या कि सर अभी जो बजट में सुनाया आया है कि इनकम टैक्स का प्रोविजन खत्म होगा और एक ट्रांजिशन का आने वाला है. वो एवरी ईयर 2-4 साल से चर्चा चल रहा है, मेनी टाइम्स हो रहा है. वो अभी चर्चा में है सर. नॉट पॉसिबल. अच्छा ठीक है. नहीं क्या है कि अभी जीएसटी का नया प्रोविजन और एक नया प्रोविजन आ जाएगा. दिस इज नॉट पॉसिबल. टैक्स प्रोफेशन के लिए तो एक और एक सरदर्द का. इन माय ओपिनियन दिस इज नॉट पॉसिबल. अच्छा ओके सर. राजेश जी नमस्कार. थैंक यू. दवे हियर. जी दवे साहब नमस्कार. As usual, calm and composed. Sir, thank you. It was a very nice deliberation by you and the presentation as usual. भले ही वो NTC हो या स्टेट हो या वेबिनार हो, आपकी प्रेजेंटेशन में 4 चांदनी लग जाते हैं सर. आज आप जो प्रेजेंटेशन में नया टिप्स मिला है. ये जो हम लोग क्या है कि जो बिलो 1 करोड़ है सब ऑडिट करते थे. अभी वो एक नया मालूम हुआ कि ऑडिट का जरूरत नहीं. सर अपील की नोटिस आने लगी. हाँ नोटिस अब चालू हो गया. अपील फरवरी में शुरू हो गई. हाँ स्टार्टेड. यस. तो उस चीज का ख्याल रखना सर. यस सर. Thank you so much, members, and thank you so much, Rajesh Mehta sir. Okay, sir. Okay, so should we now I take the meeting? Yes. Tripati? Now I take the leave. Yes. Okay, sir. Thank you so much, sir. Good night. Good night, all. नमस्कार. मैडम जी नमस्ते. Good night all. I am closing the meeting. Thank you.